सभासदों, माननीय सभापति जी, Birthday greetings. Honorable members, I am pleased to extend greetings to Honorable Members of Parliament, Sri K.C. Venugopal, Srimati Kanta Kardam, Sri Neeraj Dangi, Sri Samir Uran, whose birthdays were yesterday on 4th February, and also to Srimati S. Phongnon Koinak on her birthday today. Sri K.C. Venugopal, whose birthday is on 4th February, he has been a member of this August House since June 2020 and serving his first term. Sri K.C. Venugopal had been a member of Kerala Legislative Assembly for 3 terms, 1996 to 2001, 2001 to 2006, and 2006 to 2009. Cabinet Minister in the government of Kerala for 1 term. He has served as member Lok Sabha for 2 terms and has been a Union Minister of State for 2 terms. Honorable member had also served as Deputy Chief in Lok Sabha. Sri K.C. Venugopal is a political and social worker by profession and is married to Dr. Asha K. and blessed with son Gokul and daughter Parvati. He has chosen the names very carefully, Gokul and Parvati. Srimati Kanta Kardam has been a member of this August House since April 2018 and serving her first term. She has played an important role in various social, cultural activities and several issues concerning awareness of human rights of downtrodden, deprived sections of the society, and has been vocal for their upliftment and rights. Srimati Kanta Kardam is an agriculturist, social worker by profession and is married to Sri Veer Singh Kardam. She is blessed with 2 sons, Neeraj and Ashish, and daughters Upasana and Swati. Sri Neeraj Dangi has been a member of this August House since June 2020 and serving his first term. It is noteworthy that Honorable Sri Neeraj Dangi had made remarkable efforts in supporting the tsunami victims' families and post-tsunami relief work in Andaman and Nicobar Islands in February 2005, which was monitored by Ministry of Home Affairs, Government of India. He is a member of Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Honorable member is the son of late Sri Dinesh Dangi, a popular leader of Rajasthan, who had served as Minister in Government of Rajasthan. Sri Neeraj Dangi is an engineer, political and social worker by profession and is married to Dr. Preeti Soni. He is blessed with 1 son, Yuvan, and daughter, Katyayani. I had the good fortune to be in the assembly along with his father. Sri Samir Uran has been a member of this August House since May 2018 and serving his first term. He was a member of Legislative Assembly of Jharkhand for 1 term. As Minister of Committee of Welfare and Scheduled Castes and Scheduled Tribes as a member, he is enlightening the committee through his vast experience in the field of upliftment of SCs and STs. Sri Samir Uran is an agriculturist and farmer by profession and is married to Srimati Sushila Uran. Srimati S. Phongnon Koinak has been a member of this August House since April 2022 and serving a first term. Honorable members, I would like to share that through her untiring efforts, she has been instrumental in admitting a large number of children aged between 6 and 14 years who would drop out or never enrolled to school into formal schooling
in Mon Educational Block Resource Center, EBRC, and Aboy EBRC, which covers 37 villages. Her active role in the implementation of targeted intervention project at Aboy for injecting drug users, other vulnerable population, and being part of implementation of link workers scheme in Mon district for the prevention of HIV and AIDS is truly commendable. She also played an important role in initiation of the process of documenting Konyak cultural heritage. Srimati S. Fanganon Konyak is a social worker by profession. Honorable members, on your and my behalf, I wish them a long, healthy, and happy life and extend greetings to their family members. Honorable members, I have to inform the House of the sad demise of the President of the Republic of Namibia, His Excellency Dr. Hage G. Geingob. He was a freedom fighter, statesman, chairman of the Constituent Assembly that formulated the Namibian Constitution, the first Prime Minister of independent Namibia, and the third President of the country. He dedicated his entire life to the welfare of his people and development of his country. President Geingob was a friend of India. President Geingob role in facilitating relocation of 8 Namibian cheetahs to India in September 2022 is greatly admired. On behalf of this House, we express our deepest condolences to the government and the people of Namibia. We share our sympathies with his family, friends, and admirers. We deeply mourn the passing away of His Excellency Dr. Hage G. Geingob. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. Papers to be laid on the table. General Retired V.K. Singh. Sir, with your permission, I rise to lay papers on the table of the House as mentioned against my name at serial number 2 in the list of business today. Shri Pankaj Chaudhary. माननीय सभापति जी, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 2 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। Shri Rajiv Chandrasekhar. I rise to lay the paper mentioned against my name at serial number 3 in today's revised list of business in Rajya Sabha, sir. Thank you. Shri Rameshwar Teli. महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम से उल्लेखित दस्तावेज राज्यसभा के पटल पर रखता हूं। श्री कौशल किशोर। सभापति महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 2/5 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। श्री वी मुरलीधरन। Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Sri Ajay Bhattji, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 6 in today's list of business. श्री पंकज चौधरी। सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की निम्नलिखित अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी में सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। पेट्रोलियम फूड के उत्पाद पर विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क को 1700 रुपया मीट्रिक टन से बढ़ाकर रुपये 3200 मीट्रिक टन करने के लिए दिनांक 19 जुलाई 2022 की अधिसूचना क्रमांक 18/2022
केंद्रीय उत्पादक शुल्क को संशोधित करने के लिए दिनांक 2 फरवरी 2024 की अधिसूचना संख्या 5/2024 केंद्रीय उत्पादक शुल्क। We have Mr. K.C. Venugopal here. I tried contacting him yesterday also. He was in the flight. I was telling the House, you chose the name of your children very carefully, Gokul and Parvati. Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on External Affairs, Dr. Ashok Kumar Mittal. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy in English and Hindi of the 28th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on External Affairs, 17th Lok Sabha, on the subject countering global terrorism at regional and international levels, as listed against my name in today's revised list of business. Statement by Minister Shri Hardeep Singh Puri. Sir, with your permission, I rise to make the half-yearly statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 19th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Housing and Urban Affairs on demands for grants 2023-24 pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs. Sir, I lay the statement. Honorable members, I have received one notice under Rule 267. The notice does not merit admittance. Matters raised with permission. Shri Samir Urang. माननीय सभापति महोदय, मैं ऐसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को सदन में आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं। गुमला जिला में आज तक रेल लाइन नहीं पहुंचा है। मैं बार बार सदन के माध्यम से आग्रह कर रहा हूं कि लोहरदगा से लेकर के कोरबा, ये धर्मजयगढ़ से कोरबा का लाइन प्रारंभ हो गया है रेल लाइन, और धर्मजयगढ़ से लोहरदगा 291 किलोमीटर है। ये कई बार इसका सर्वे हो रहा है, लेकिन ये निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है। गुमला, जसपुर ये जनजाति बहुल क्षेत्र है। वहाँ से हमारे जो है देश के सेवा करने के लिए कई ऐसे सैनिक वहाँ देश की सेवा कर रहे हैं, और एक बहुल जनजाति बहुल क्षेत्र है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ये जो है सर्वे होने के बाद यथाशीघ्र यह रेल लाइन बने, जिससे कि गुमला से जसपुर और धर्मजयगढ़ से कोरबा, और इधर जो है जसपुर गुमला से रांची तक जा करके वहाँ के जो सैनिकों के लिए रेल की सुविधा हो सकती है। वहाँ किसान हैं, किसानों को फल सब्जी के लिए आगे वो बढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ वो माइनिंग एरिया भी है, और इन सारे सुविधाओं से वो आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि माननीय रेल मंत्री जी इसको यथाशीघ्र निर्माण कार्य को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद माननीय समीर उरांव जी। ऑनरेबल श्री वाई को सब्जेक्ट नीड टू रिलीज नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड टू तमिलनाडु विदाउट डिले। Honorable Deputy Chairman, sir, the recent heavy rains and floods due to Cyclone Machong, which devastated 5 districts of Tamil Nadu, namely Chennai, Tiruvallur, Kanjipuram, Chengalpattu, caused loss of life and damages to vast public and private property, followed by these unprecedented heavy rains and waterlogging and floods in 5 districts, Tirunelveli, Thoothukudi, Kanyakumari, Chengalpattu, Tiruvallur,
resulted in destruction of public infrastructure and made lakhs of people homeless. I have requested the Honorable Prime Minister and Home Minister through my letter dated 19th December to send a central team to visit disaster-prone areas for release of financial assistance. Our Honorable Chief Minister, Thalapathy Stalin, also requested for release of rupees 37,000 crore for providing relief to the disaster-affected people and to improve the public infrastructure which was damaged. We also demanded that the recent disaster occurred to Tamil Nadu be declared as a national disaster and adequate relief fund may be released immediately. In this connection, a higher level delegation of MPs from Tamil Nadu also met the Honorable Home Minister at Delhi on 13 January 2024 for expeditious release of funds, in which I was also present. In that meeting, the Honorable Home Minister assured that all formalities will be completed and adequate funds will be released soon. However, nothing had happened so far. Despite the report was presented by the central team to the Home Ministry, this is a stepmotherly treatment meted out to the state of Tamil Nadu. I would therefore demand that the disaster relief amount as demanded by the Tamil Nadu government may be released immediately to the state, as people are still suffering from the disaster and lot of relief and reconstruction works are awaiting for the funds. Thank you, Vaikoji. Dr. Fauzia Khan need to make dash cams mandatory for reducing hit and run cases in India. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. The amendment to Section 106 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Section 304A of the IPC, brings about significant changes in addressing road safety and traffic violations. Sir, Section 279, 304A, 338 of IPC apply in hit-and-run case incidents. In extreme cases, the police may book a hit-and-run case under Section 302. 302 जो खून करने पर लगता है और कोई ड्राइवर जो 302 सेक्शन में बुक हो गया उसको सजाए मौत हो सकती है या उम्र कैद हो सकती है सर। कुछ दिन पहले इन प्रोविजंस को लेकर इसके विरोध में बहुत भारी संख्या में ड्राइवर्स एसोसिएशन ने रास्तों पर आकर प्रोटेस्ट भी किया था। सर, किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में सबूत की बड़ी आवश्यकता होती है। अगर सज़ा इतनी भारी हो तो सबूत की स्पष्टता भी आवश्यक होनी चाहिए। One key aspect that deserves attention in the wake of these stringent measures is the promotion of dash cams. Dash cams have emerged as a valuable tool that can provide concrete evidence in the event of a road accident. So most countries in the world have adopted this on a large scale. Making the use of dash cams mandatory for manufacturers aligns with the objective of collecting reliable evidence, ensuring transparency, and facilitating a fair legal process. So today, seat belts, belt beeps, plastic bonnets, and so on have been made mandatory for manufacturers. Dash cams may be made mandatory in the same way. The significance of dash cams becomes more pronounced considering the prevalent issue of tampering with evidence and corruption within the authorities. In advocating for the widespread adoption of dash cams, it is crucial to highlight their role in not only protecting law-abiding citizens, but also acting as a deterrent against corrupt practices by law enforcement, sir. Sir, these devices serve as an impartial witness, recording events accurately and discouraging unethical behavior. As India grapples with the challenges posed by strict traffic regulations, the incorporation of dash cams emerges as a practical and effective solution to address concerns related to accidents, evidence tampering, and promote responsible driving practices, sir. Thank you. Thank you. Manya Shri Imran Pratap Gadi, concern over unconstitutional action taken by DDA to remove encroachment in Delhi. उपसभापति महोदय, मैं डीडीए द्वारा उजाड़ी जा रही दिल्ली की दास्तान और कुछ ऐतिहासिक इमारतों की चीखें लेकर आपके सामने खड़ा हूं। एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी,
दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। इसी 26 जनवरी को भारत के मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को रूहानी दिल्ली का दीदार कराने के लिए हमारी सरकार निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर लेकर गई थी। मेरी आंखों में एक तरफ तो यह तस्वीर है और दूसरी तरफ इसी सरकार के इशारे पर रात के अंधेरे में जमींदोज कर दी गई सैकड़ों साल पुरानी मामा भांजा, मंडी हाउस, काका नगर की छोटी छोटी मजारें हैं जो पूछ रही हैं कि हमें तोड़ा क्यों गया। उपसभापति महोदय, अबू धाबी जाकर शेख जायद मस्जिद में मुस्कुराते हुए सेल्फी लेने वाले प्रधानमंत्री जी को मेहरौली की 700 साल पुरानी अखूंजी मस्जिद के टूटने की चीखें क्यों नहीं सुनाई पड़ती। डीडीए के अधिकारी सुबह 5 बजे अंधेरे में मेहरौली में एक मस्जिद, बच्चों के पढ़ने का मदरसा और एक मंदिर को जमींदोज कर देते हैं। जो डीडीए 1957 में गठित हुआ वो अपनी पैदाइश से कई सौ साल पहले पुरानी मेहरौली मस्जिद को अतिक्रमण बताता है। क्या विकास प्राधिकरण संसद के बनाए हुए 1991 वर्शिप एक्ट को नहीं मानते? संसद से 4 कदम की दूरी पर मौजूद सुनहरी बाग मस्जिद, जिसका सैकड़ों साल पुराना इतिहास है, जिसके सहन में कभी संविधान सभा के सदस्य इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले मौलाना हसरत मोहानी बैठा करते थे, वो आज एनडीएमसी को अतिक्रमण नजर आता है। जिस मस्जिद को लुटियन बसाने वाले अंग्रेजों ने नहीं ढहाया, उसे एनडीएमसी और डीडीए उजाड़ना चाहती है। आखिर कब रुकेगा यह सिलसिला? तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। दूर कहीं अशफाकुल्लाह खान, बीर अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान की रूहें क्या सोचती होंगी? जामा मस्जिद की वो सीढ़ियां क्या सोचती होंगी जहां खड़े होकर कभी मौलाना आजाद ने लोगों को अपनेपन का यकीन दिलाया था। गैजेट, हेरिटेज, सैकड़ों साल का वजूद क्या हमारी संस्थाओं के लिए कोई मायने नहीं रखते? मैं आपके माध्यम से इस सदन से पूछना चाहता हूं और सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार देश को बताए कि वो 700 साल पुरानी इमारत को गैर कानूनी तरीके से जमींदोज करने वाले डीडीए के अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी। वो देश को यह विश्वास दिलाए कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर इस नए भारत के निर्माण तक सैकड़ों कहानियों की गवाह सुनहरी बाग मस्जिद को सुरक्षित रखा जाएगा। विरासतों को सहेजा जाता है, उनसे नफरत नहीं की जाती, उन्हें उजाड़ा नहीं जाता। धन्यवाद। थैंक यू। माननीय श्री वी विजय साई रेड्डी, सब्जेक्ट डिमांड टू विथड्रॉ द ड्राफ्ट डी रिजर्वेशन पॉलिसी प्रपोज्ड बाय यूजीसी। Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, as per the data submitted to the Lok Sabha in the month of August 2023, 4% of the professors and 6% of the assistant professors working in central universities belong to OBC. Sir, this number stands at 7% in the case of SCs and mere 1.5% in the case of STs. Sir, quite surprisingly, University Grants Commission, UGC, has issued recently draft guidelines de-reserving the vacancies meant for SCs, STs and OBCs, OBC candidates in higher educational institutions, and open up them for general category. This is very much unconstitutional and unwarranted, sir. The guidelines clearly state the ban on de-reservation of reserved vacancies in direct recruitment might be lifted in exceptional cases. I really don't understand what exceptionally exception cases and that are prevailing now for the UGC to take such a the unconstitutional step, sir. Sir, the central, I draw your kind attention to the Central Educational Institutions Reservation Teachers Cadre Act 2019 clearly prohibits the de-reservation. Sir, the general procedure that is being followed and throughout India, in all, not only in respect of educational institutions, but even in respect of other government bodies, non-government bodies also, unfilled quota positions in universities, in the case of SC, STs and OBCs. And if they are not filled and unfilled and re-advertised and then special recruitment drives are carried out till the suitable candidates are identified and until
the suitable candidates are identified, and these vacancies are filled, this procedure will go on, and there's no occasion and there is no reason why this should be de-reserved, sir. Sir, my sincere appeal to the government to prevent UGC from implementing such draft guidelines that erode the constitutional rights and protections which have been conferred on SCs, STs and OBCs for, in the case of reservation, sir. I urge the government to ensure that the vacant positions reserved for these OBCs, SCs and STs are expeditiously filled and concerted effort should be made. Thank you very much, sir. Thank you, Mani Vijay Sai Reddy ji. Mani Shri Ajay Pratap Singh, demand to include Kol tribe in particularly vulnerable tribal groups, PBTG. माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का और सरकार का ध्यान कोल जनजाति की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। यह सर्वविदित तथ्य है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय आबादी निवास करती है। मध्य प्रदेश की आबादी का लगभग 21% आबादी जनजाति भाइयों की है। इन जनजाति भाइयों के बीच में लगभग 7.68% आबादी कोल जनजाति की है। मध्य प्रदेश की यह तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसका उद्गम स्थल कहा जाता है रीवा जिले के फरेंदा गांव या कुराली गांव में है। ये जो कोल जनजाति है, इसके शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के अध्ययन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक समिति का गठन किया था। उस समिति ने सतना जिले के 5 गांवों का सैंपल के तौर पर चयन करके उनका जो अध्ययन किया है, उसके निष्कर्ष से मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं। उसके निष्कर्ष के अनुसार कोल जनजाति के मध्य जो शिक्षा का प्रतिशत है सतना जिले में, वो लगभग 32% है। सतना जिले की आबादी लगभग 22 लाख है। 22 लाख में से कोल जनजाति 2,68,000 हैं। 2,68,000 के बीच में मात्र चंद सैकड़ा लोग ही स्नातक हैं। कुछ लोग ही 12वीं की कक्षा पास किए हुए हैं। कोल जनजाति के लोगों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। ये सामान्यतः मजदूरी करते हैं अथवा खेतीहर मजदूर हैं। बड़े शहरों में रिक्शा चलाते हैं। इनके पास आवास के लिए भी कोई अपनी ज़मीन नहीं है। ये अन्य जाति के किसानों की ज़मीन पर बसे हुए हैं अथवा सरकारी भूमि पर बसे हुए हैं। इनका ये जो मुद्दे हैं, ये जो समस्याएं इस कोल जनजाति की, इसको हल करने के लिए मेरा सरकार से आग्रह है कि जो अभी प्रधानमंत्री जनमन योजना लागू की गई है पीवीजीटी ट्राइब के लिए, उसके तहत या तो कोल जनजाति को पीवीजीटी ट्राइब के अंतर्गत शामिल किया जाए अथवा प्रधानमंत्री जनमन योजना का विस्तार कोल जनजाति तक किया जाए, जिससे कि उनका जो आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन है वो दूर हो सके और विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सके और उनका भी उत्थान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अजय प्रताप जी। माननीय श्री इरण कडाडी, नीड फॉर अमेंडमेंट इन एमपी लैट्स गाइडलाइंस। माननीय श्री इरण कडाडी, नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री मुजीबुल्लाह खान, डिमांड टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर्स टू ओडिशा। उपसभापति महोदय, आज आप बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आभारी हूं। सर, उड़ीसा में किसानों के लिए फर्टिलाइजर का बहुत कमी है। इसी के कारण हमारे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी कई बार कृषि मंत्री जी को चिट्ठी लिख चुके हैं, बोल चुके हैं और केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि फर्टिलाइजर उड़ीसा में जो कमी हो रहा है उसको कैसा फुलफिल किया जाए। नेशनल लेवल का अगर देखा जाए सर, तो पर हेक्टर 137 मतलब 1 क्विंटल 37 केजी पर हेक्टर खर्चा होता है या फिर केंद्र सरकार देती है। लेकिन उड़ीसा में 66.17 माने 66 किलो ही फर्टिलाइजर दिया जाता है। उसका मतलब काफ़ी कम है, 50% करीब कम दिया जाता है। इसीलिए हमारा डिमांड है सर, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में
उड़ीसा में 76% लोग इन्वॉल्वमेंट है। 87,46,000 हेक्टेयर में फसलें होती है सर, उसमें 18,79,000 हेक्टेयर इरिगेटेड लैंड है। इसके बावजूद, इतना डिमांड करने के बावजूद पता नहीं क्यों हमारे फर्टिलाइजर शॉर्टेज हो रहा है। केंद्र सरकार क्यों नहीं सुन रही है मुझे पता नहीं। आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि हमारे उड़ीसा में एग्रीकल्चर फार्मर्स बहुत अच्छा फसल कर रहे हैं। इसी के कारण जो कृषि कर्मण अवार्ड जो दिया जाता है केंद्र सरकार की ओर से, वो उड़ीसा सरकार को 5 बार से ज्यादा दिया जा चुका है। उसका मतलब बहुत ही अच्छा फसल उड़ीसा के किसान लोग कर रहे हैं। सर, मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि पहले दिन ऐसा था, कुछ साल पहले ऐसा था कि लोग खाने को अनाज नहीं पाते थे। छोटे छोटे बच्चों को पेट में अनाज देने के लिए उनके परिवार का जो पिता होता था, जो भी होता था, वो चोरी करके ला के अपने बच्चों को अनाज देता था सर। इसीलिए खेत से अनाज चोरी हो जाएगा, इसके कारण बहुत से किसान रात को खेत में जाके सोते थे, खेत में जाके जगते थे सर। लेकिन आज स्थिति ऐसा है, कोई खेत में जगता नहीं है, कोई खेत में सोता नहीं है, क्योंकि सबके घर में अनाज है सर। उसका मेन कारण है, उसका मुख्य कारण है कि उड़ीसा का सरकार, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो किसानों के लिए जो योजना किए हैं वो उनको लाभ दे रहा है और बहुत सुविधा से किसान अपने परिवार को पोषण कर सक रहे हैं सर। उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक योजना है कालिया योजना, जिसके तहत किसानों को 5,000 रुपया हर सालाना दिया जाता है और 50,000 रुपया तक सर उनको बिना इंटरेस्ट के लोन दिया जाता है, जिसके कारण किसान आज उड़ीसा में खुशहाली है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो ये फर्टिलाइजर शॉर्टेज हो रहा है, कैसा इसको फुलफिल किया जाए। आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि उड़ीसा के किसानों को। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी कंसर्न ओवर राइजिंग केसेज ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड इन द कंट्री। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय नर्मदे हर। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार एवं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आज हर भारतीय ऐप, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग या अन्य डिजिटल ऑनलाइन साधनों के माध्यम से अपने लेन देन की दैनिक क्रिया को बिना समय गंवाए आसानी से पूरा कर रहा है और यह डिजिटल युग का कमाल है। कोरोना महामारी के काल को माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व ने आपदा को अवसर में बदल कर रख दिया है, जिसका परिणाम अब सबके सामने है। दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल लेन देन हमारे देश में हो रहा है, यह हम सब के लिए गौरव का विषय है। माननीय उपसभापति महोदय, जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है, उसी के साथ साथ बहुत बड़ी चुनौतियां भी आती जा रही है। इसी क्रम में इस डिजिटल युग में डिजिटल लेन देन ऑनलाइन के माध्यम से कुछ लोग फ्रॉड या ठगी या धोखाधड़ी कर रहे हैं, जिसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। हमारी सरकार इस प्रकार का फ्रॉड करने वाले लोगों के लिए कई प्रकार के कानून लेकर आई है। पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन के माध्यम से फ्रॉड या ठगी करने वाले मामलों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में बैंकिंग क्षेत्र में लगभग 13,500 ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले दर्ज हुए हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले निजी बैंकिंग क्षेत्र में हुए हैं। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत को पिछले 7 सालों में हर रोज औसतन करीब लगभग 100 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ बैंक फ्रॉड या स्कैम के जरिए हुआ है। माननीय उपसभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार एवं निजी एवं सरकारी बैंक के अधिकारियों से एक सवाल भी है। यदि हमारे देश के सभी बैंक खाते आधार से जुड़े हुए हैं, आधार कार्ड पहले से ही तकनीकी रूप से सत्यापित हो चुके हैं, तो यदि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई फ्रॉड या ठगी होती है तो हमारे सिस्टम में ऐसी क्या खामी है जो हम फ्रॉड करने वाले लोगों के खातों को ट्रेस नहीं कर पा रहे या पकड़ नहीं पा रहे हैं? यदि इस प्रकार की कोई खामी है तो उसे दुरुस्त किया जाना चाहिए और दोषी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाना चाहिए। ऐसे असंख्य केस है जो लिखित में नहीं आते हैं। मैं भी दूरदराज आदिवासी क्षेत्र से आता हूं। यह पीड़ा मेरे क्षेत्र के लोगों की भी है। एक कॉल या एक मैसेज
में आए लिंक को खोलने मात्र से उस गरीब की मेहनत शून्य हो जाती है। माननीय उपसभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निजी क्षेत्र के बैंक का अधिकारियों से विशेष आग्रह है कि वो अपने वित्तीय लेन देन के सिस्टम को इतना मजबूत बनाएं कि किसी गरीब के लिए यह बैंकिंग धोखाधड़ी श्री संजीव अरोरा। Thank you, Deputy Chairman, sir, for allowing me to take up this important issue. This is mainly regarding state of Punjab. I would like to draw the attention of the government through you to a significant issue concerning the wage rate notified under Manrega for the state of Punjab. The rate finalized for the state of Punjab is 303 rupees per day compared to higher rates in neighboring states, especially Haryana, which is 357. The minimum wage which Punjab government has done is 413 rupees. So my request is not only Punjab, in whole of nation, Manrega should match the minimum wage finalized by the state if it is higher. I mean, otherwise people do not want to work for Manrega schemes, and two things happen. Unemployment is also there, and then the schemes are not implemented. Even the total fund allocation on this account to the state of Punjab is going down as per official data from last years. In light of these disparities, I humbly request government through you to intervene to reevaluate the current wage rate for Punjab under Manrega. It is imperative that the wage rate is increased to bring it to par with either the neighboring state or the minimum wage as set by the Punjab state government. Thank you. Thank you. श्री हरनाथ सिंह यादव। माननीय सभापति जी, मैं भारत सरकार के उपासना स्थल कानून 1991 के मनमाने और असंवैधानिक प्रावधानों की ओर आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ। महोदय, उपासना स्थल 1991 में कहा गया है कि पूजा स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस कानून में श्री राम जन्मभूमि को अलग रखा गया है। माननीय, यह कानून संविधान में वर्णित समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जो संविधान की प्रस्तावना और मूल संरचना का एक अभिन्न अंग है। महोदय, इस कानून में प्राविधान है कि श्री राम जन्म मुकदमे के अतिरिक्त अदालतों में लंबित ऐसे सभी मुकदमे समाप्त माने जाएंगे, और यदि कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 1 साल से 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। महोदय, उपासना स्थल कानून 1991 न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, जो संविधान की बुनियादी विशेषता है। यह कानून एक मनमाना और तर्कहीन कट ऑफ तिथि भी लागू करता है, जो हिंदू, सिख, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के धार्मिक अधिकारों को कम करता है। माननीय, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद जो लोग लंबे समय तक सत्ता में रहे, वे पूजा स्थलों की महत्ता को नहीं समझ सके, और उन्होंने राजनीतिक फ़ायदों के लिए अपनी ही संस्कृति पर शर्मिंदगी होने की प्रवृत्ति स्थापित की। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपने अतीत को भूलकर एवं मिटाकर और अपनी जड़ों को काटकर प्रगति नहीं कर सकता। महोदय, इस कानून का स्पष्ट अर्थ यह है कि विदेशी आक्रांताओं द्वारा तलवार की नोक पर ज्ञानवापी और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि सहित अन्य पूजा स्थलों पर जो बलात् कब्जा किया गया, उसे विगत सरकार द्वारा कानूनी रूप से सही ठहरा दिया गया है। माननीय, यह कानून मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान श्री कृष्ण के मध्य भेदभाव पैदा करता है, जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। महोदय, यह स्थापित तथ्य है कि समान कृत्यों और समान परिस्थितियों के लिए 2 कानून नहीं हो सकते। दूसरे, कोई सरकार किसी भी नागरिक के लिए न्यायालय के दरवाजे नहीं बंद कर सकती। महोदय, यह उपासना स्थल कानून पूर्णतः अतार्किक,
असंवैधानिक है, हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों को संविधान में प्राप्त धार्मिक अधिकारों का हनन करता है, जो देश के सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ रहा है। अतः मैं आपके और सदन के माध्यम से देश हित में इस कानून को अविलंब समाप्त करने की मांग करता हूं। धन्यवाद। श्री A.D. Singh. Thank you, Deputy Chairman, sir. Need for India's effective engagement in the Arctic region. India fulfilled a long-standing need and signaled its rising interest and stakes in the Arctic with the release of the Arctic policy on 17th March 2022. The study of the Arctic is critical to Indian scientists as it influences our monsoon, which directly imparts agriculture sector on which almost 60% of India's population is dependent. The rising sea levels due to the Arctic ice melt also threatens India's 1,300 island territories and the welfare of 1.4 billion Indians. The Arctic meltdown also helps India's scientists better understand the glacial meltdown in Himalayas, the largest source of fresh water outside the poles and home to almost all of India's perennial rivers. It is for this reason that India is the only developing country apart from China to have a permanent research station in the Arctic since 2008 and has undertaken 13 scientific expeditions to the region. The Arctic, therefore, presents India with a complex set of opportunities as well as challenges to secure its increasing national interest. Firstly, India should seek a more inclusive and equitable Arctic Council with a greater say for the observer states in the decision-making process and more freedom in pursuance of the research objectives in the Arctic region. Secondly, India should also fine-tune its own internal mechanism to impart a greater impetus to its Arctic endeavors with a more singular, coordinated and cohesive approach by appointing an Arctic coordinator. I urge the government to coordinate its efforts in playing a pivotal role in the Arctic region. Thank you. Honorable members, welcome to the parliamentary delegation from Republic of Suriname. Honorable members, I have to make an announcement on my own and your behalf. I have great pleasure in welcoming Sri Marinus Bey, Chairman of the National Assembly of the Republic of Suriname, and the accompanying members of the parliamentary delegation of Suriname who are on a visit to India as our honored guests. The parliamentary delegation from Suriname arrived in India on Sunday, 4th February 2024, and now are seated in the special box. Besides Delhi, they will visit Agra before their final departure from India. We wish them a happy and fruitful stay in our country. Through them, we convey our greetings and best wishes to the members of Parliament of Suriname, the government and friendly people of Suriname. Santosh Kumar P. Shri Santosh Kumar P. Thank you, Chairman, sir. Sir, there is an urgent, a critical need to increase the minimum wages of our workers in the country. Minimum wage is a concept which is universally accepted for combating poverty and stabilizing the economy. But unfortunately, in our country, the national minimum wage is shockingly low. That is just 178 rupees for 8 hours. So the trade unions, central trade unions and the Samyukta Kisan Sabha, Samyukta Kisan Morcha are demanding
an increase in this, and at least 26,000 rupees must be provided for the workers in our country. As we all know, 90% of the workforce actually are in the informal sector. They don't have any social security, no security for their jobs, so the working conditions are also very miserable. In fact, there is no job contract as such. And in states also, between the states also, there is huge disparity. For example, in Kerala it is 837 for 8 hours, whereas in Gujarat it is 296 and in Tripura it is 250. So there is huge disparity amongst the states as well. So we have to enhance the minimum wages. Anup Satyavarthi Committee recommended in the year 2019 that at least 375 rupees must be the minimum wage. That is not accepted. And this was revised last in 2017. So I urge the government to increase the minimum wages of our workers who are actually the backbone of our economy. There is a system in government sector and corporate sector to provide DA and to increase salary. But these people are left without any social security or any such system. Then their bargaining capacity is also very low. So once again, I take this opportunity to request the government through you to take necessary steps to enhance the minimum wage of our poor workers. Thank you, sir. माननीय सदस्य अशोक कुमार मित्तल जी। धन्यवाद। आज मैं इस सदन के सामने दुनिया भर के 3 करोड़ सिख व करोड़ों अन्य श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़े एक मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। भारत सरकार टूरिज्म प्रमोशन के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाती है, जिसमें एक योजना है स्वदेश दर्शन, जिसमें 5200 करोड़ की कीमत से 76 प्रोजेक्ट शुरू किए जा चुके हैं। इस योजना में पूरे देश में प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान गौतम बुद्ध और भगवान महावीर से संबंधित धार्मिक स्थलों को आइडेंटिफाई करके सर्किट के माध्यम से अलग अलग राज्यों में विकसित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल ही गुवाहाटी में शक्तिपीठ कामाख्या देवी जी के मंदिर की डेवलपमेंट के लिए भी 500 करोड़ रुपए का लागत से बनने वाला शिलान्यास रखा, जिसके लिए भारत सरकार बधाई की पात्र है। मैं पंजाब से आता हूं, जो श्री गुरु नानक देव जी, श्री गोविंद सिंह जी और हमारे अन्य सिख गुरुओं की पवित्र धरती है। इन सभी गुरुओं ने दुनिया को मानवता, धर्मनिरपेक्षता और एक ओंकार का पाठ पढ़ाया है। हमारा महान श्री गुरु ग्रंथ साहब लोगों को निस्वार्थ सेवा करना सिखाता है, समाज से जुड़ना सिखाता है और उन सबको बराबर का सम्मान देना सिखाता है। सिख धर्म के 5 तख्त हैं, श्री अकाल साहब अमृतसर, श्री केसगढ़ साहब अनंतपुर साहब, श्री दमदबा साहब तलवंडी साबो, श्री पटना साहब पटना और श्री हजूर साहब महाराष्ट्र के नंदेड़ में स्थित है। इसके अलावा पूरे देश में सिख धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, जैसे कि गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब उत्तराखंड, गुरुद्वारा श्री पोंटा साहब और गुरुद्वारा श्री मणिकरण साहब हिमाचल प्रदेश, गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब पंजाब। इन सभी धार्मिक स्थलों की आस्था और मान्यता को देखते हुए पूरे विश्व भर से हर वर्ष करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और मैं सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने सिख सर्किट के लिए एक ट्रेन भी शुरू कर दी है। अब मेरी मांग है कि स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से सिख सर्किट भी शुरू किया जाए, जिसमें हर राज्य में सिख धार्मिक स्थलों का विकास करके भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाओं का निर्माण हो, ताकि इन सभी धार्मिक स्थलों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी दी जाए। इन सभी स्थलों को आपस में व मेट्रो सिटी से रेल, रोड, एयर के माध्यम से जोड़ा जाए, ताकि सभी श्रद्धालुओं को जो पूरे देश से दुनिया से आते हैं इन धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का लाभ मिल सके। धन्यवाद। माननीय सदस्य जी, आपका समय समाप्त, अब नोट पर नहीं आएगा। माननीय सदस्य श्री मोहम्मद नदीमुल हक जी। थैंक यू मैडम।
need to release funds under NFSA owed to Bengal. The Union government has withheld the release of rupees 7,000 crore to a state of West Bengal to procure paddy under the National Food Security Act. The state government has successfully acquired 8.52 lakh tons of paddy for the central pool this fiscal year. The state aims to achieve 80% of its annual procurement target during the ongoing Kharif season, which extends until the end of February. Timely release of funds is crucial, otherwise the entire procurement process may be affected. The halt in funds to Bengal stems from the need for NFSA logos and the Prime Minister's pictures to be put up across all ration shops in the state. Madam, it is ridiculous that the Union government is willing to jeopardize an entire state's food security over a delay in plastering the Prime Minister's image, which is a time-taking task. This is the Union's rationale to withhold the funds. So Madam, let me read out a quote from Prime Minister Modi from 2018, and I quote, "Federalism is no longer the fault line of center-state relations, but the definition of a new partnership of Team India," unquote. However, since the current government has come into power, there has been a systematic deprivation of states, pushing people into distress in regions where they are incapable of winning elections democratically. Madam, the Union government has blatantly carried out anti-federal policies and engaged in fiscal federal terrorism, denying Bengal funds worth rupees 1 lakh crores under several schemes. Despite pleas from a chief minister, party leaders and beneficiaries, the Union has chosen to remain indifferent. This goes against the very spirit of the Constitution. This goes against the people of Bengal. I challenge you, fight us democratically, fight us in elections, but do not make crores of people suffer for your political vendettas. I urge this government to immediately reimburse rupees 7,000 crore for procuring paddy under the National Food Security Act. Thank you, Madam. माननीय सदस्य श्री जवाहर सरकार जी, अनुपस्थित श्री राकेश सिन्हा जी है? Yes. Huh? Madam, we had requested the Government of India to change the name of the state of West Bengal to Bangla. This has been pending from 2016. And the West Bengal Legislative Assembly has taken a unanimous resolution that if, say, the name of Odisha can be changed to Odisha, आप सब्जेक्ट पे बोलिए, आपका सब्जेक्ट ये नहीं है. डिमांड फॉर वर्सिकल इन status for simultaneously Bengal. we have been agitating for the inclusion of Bangla as a classical language. We have taken a resolution on this score, and we have submitted a 4-volume research paper to the Government of India on this subject. We ask for consideration of the details submitted thereon to establish the antiquity of the language of Bangla in syntax, in grammar, and largely in alphabet from the 4th century BC. It is our humble submission that our case as to include Bangla as a classical language be considered positively. माननीय श्री एस सिल्वागन वेथी, श्री बिजलाल जी, स्टेट ऑफ। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय। उत्तर प्रदेश में भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और वहाँ पर शुरुआत में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन के बाद फुटफॉल 5 लाख पर डे था। एवरेज वहाँ पर फुटफॉल हो रहा है 3 लाख। और ये जो फुटफॉल है न केवल अयोध्या में, काशी में और मथुरा में,
ये इतना फुटफॉल है कि इससे पर्यटन को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। और उत्तर प्रदेश जो हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं, उसमें $1 ट्रिलियन योगदान उत्तर प्रदेश का होगा और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान होगा धार्मिक पर्यटन का। अयोध्या में के विकसित होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहाँ का मैं भी रहने वाला हूँ, वहाँ के लोग विकसित होंगे। काशी में काफ़ी फुटफॉल हो रहा है। जब से वहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्वनाथ कॉरिडोर का बनाया, जिस तरह से उसको ब्यूटीफाई किया है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है हमारे पर्यटन उद्योग में। उपसभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में एक है बुद्धिस्ट सर्किट। बुद्धिस्ट सर्किट के जो 3 मुख्य स्थान हैं, 4 स्थान कहिए, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती और हमारा जिला सिद्धार्थनगर है, जहाँ पर है कपिलवस्तु जन्म स्थान। कपिलवस्तु 1972 में खुदाई हुई, उसके पहले भी अंग्रेज भी वहाँ खुदाई करा चुके थे और वहाँ स्तूपा मिला। वहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध महाराज के पिता सुशोधन महाराज जी का महल मिला और ये केमिकल एनालिसिस से ये प्रूव हो चुका है कि जन्मस्थल है। वहाँ उनकी अस्थि भी मिली थी जो दिल्ली में रखी हुई है। तो हमारा अनुरोध ये है कि भारत सरकार को ये जो बुद्धिस्ट सर्किट है, इसके विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूँ कि कुशीनगर में उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना की। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है और ये जो जगहें हैं बुद्धिस्ट सर्किट भी है, वो अयोध्या और काशी, यहाँ के आसपास ये बुद्धिस्ट सर्किट हैं। और ख़ासकर मैं कपिलवस्तु के बारे में कहूँगा कि उसको हम लोग उतना कैश नहीं कर पाए। अभी वहाँ पर व्यवस्था नहीं है, होटल्स नहीं है, रुकने के अच्छे स्थान नहीं है और केवल वहाँ पर जो रास्ता है केवल गोरखपुर से और वहाँ तक ट्रेन की उसमें, बस्ती से वहाँ तक बड़ी अच्छी सड़क बन चुकी है। तो मेरा अनुरोध ये है भारत सरकार के कि जो बुद्धिस्ट सर्किट है उसको सुदृढ़ किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत से जो बुद्धिस्ट। माननीय सदस्य संगीता यादव जी। माननीय सभापति जी, आपने मुझे भारत में किशोर लड़कियों और महिलाओं के मासिक धर्म स्वच्छता संबंधी राइट टू हाइजीन पे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको आभार प्रकट करती हूँ। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है माननीय सभापति जी जो देश की 50% आबादी से जुड़ा हुआ मामला है। और 2017 से लेकर 22 तक जब मैं MLA थी तो मैं लगातार बड़े स्कूलों, जितने भी हमारी बच्चियां हैं जो 11 साल से ज़्यादा थी, उन सभी स्कूलों में और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं थी उनमें मैंने फ्री नैपकिन हमें हमेशा बांटने का काम किया 5 साल और जागरूकता अभियान भी चलाया। इसमें माननीय सभापति जी, गांव के हमारे प्रधान, पूर्व प्रधान, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, उनका सबका सहयोग मिला। पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में ये चर्चा का विषय बिना, नहीं तो ये बंदिशों में ही हमेशा रहता था। और माननीय सभापति जी, हजारों महिलाओं और बच्चियों को हम लोगों ने गर्भाशय से जुड़े हुए अनेक बीमारियों से बचाया। तो मैं इसमें 0 आवर के माध्यम से मैं आपसे कुछ अपील करना चाहती हूँ। माननीय सभापति जी, माननीय मोदी जी ने भी लाल किले से इस मुद्दे पे चर्चा किया है और जब से पैडमैन मूवी आई तब से ये चर्चा का विषय और ज़्यादा विस्तृत तौर पे हुआ। लेकिन आज भी 5वें राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के अनुसार, स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार केवल 36% महिलाएं ही सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करती हैं। बाकी आज भी अज्ञानतावश अस्वच्छ सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो माननीय सभापति जी, ये इससे बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारियां बच्चियों में, महिलाओं में फैल रही हैं। मैं सिर्फ आपके माध्यम से इतना ही अपील करूंगी कि सरकार इसमें अच्छा काम कर रही है, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन इसको मिशन मोड में करने की आवश्यकता है। एक तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करूंगी, इसको मिशन मोड में ले आया जाए, क्योंकि ये राइट टू हाइजीन देश की आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी आज भी हमारी समस्या बना हुआ है। और यूट्रस कैंसर एक ऐसा कैंसर है माननीय सभापति जी जो ज़्यादातर 4th स्टेज पे ही मालूम पड़ता है, ये इसी से जुड़ा हुआ है। और भी बांझपन की समस्या हुआ, संक्रमण की समस्या है, सर्वाइकल कैंसर है जो अभी बजट में भी हमारे माननीय मोदी जी ने रखा है।
उसमें हमने चर्चा की है। लेकिन ये अगर इसमें हमने काम किया तो हमें ये अपनी 50% आबादी को बहुत सी बीमारियों से बचा पाएंगे। और 2 अपील और करूँगी माननीय सभापति जी आपके माध्यम से कि इस काम के जो हमारे लोकल जनप्रतिनिधि हैं, मिशन मोड में जो सरकार अभी कर रही है उसको शामिल किया जाए, लोकल एनजीओ को शामिल किया जाए। धन्यवाद। क्वेश्चन और नाउ क्वेश्चन और प्लीज संगीता जी बैठ जाए। क्वेश्चन नंबर 16 ऑनरेबल श्री आर गिरिराजन प्रेजेंट। माननीय मंत्री जी। Thank you, sir. Laid on the table of the House. Thank you. First supplementary. Please be brief in your question. Sir, in his answer, the Honorable Minister has said the price of CNG at Delhi has increased by just 1.30%. Sir, in 2021, the price of CNG was increased 4 times. Please question Mr. R. Rajan. Yes. That's why I'm asking. On February 8, 2021, the price of CNG was increased from 49.90 to 49.40 per kg. The highest CNG price was recorded in Mr. R. Rajan, please question. Question. Raised in 115. Sir, my question, CNG is considered to be an eco-friendly and cost-effective fuel compared to diesel and petrol. The very purpose of encouraging the use of CNG is to reduce pollution and is much cheaper than diesel. Mr. R. Rajan, your question has not come till now. My question is whether the government has taken steps to bring back the prices of CNG to rupees 50 per kg. And would like to know the total compressed CNG. Thank you. Please be brief in your question. माननीय मंत्री जी, जवाब भी briefly ही देंगे. Sir, I am entirely in agreement with the honourable member that the government should encourage more consumption of compressed natural gas because it's relatively a cleaner fuel. Although there is a debate in the West whether even that's an entirely green fuel or not, but I won't get into that. It is for that reason, sir, the government has ensured the reference period in the question was the last 18 months. And the government has ensured that whilst global prices were witnessing turbulence, massive increases, shortfall, honourable member just now in his supplementary referred to an earlier period than 18 months. There was a period when there was a lockdown, and lockdown prices don't reflect reality prices. For instance, during the lockdown, the crude price came down to $19.56 a barrel, and then it shot up to $128 and $130. Sir, we were able to do this for 2 reasons. We rationalized our system of calculating cost in April 23, and as a result of which, whilst the global prices were $53.51 the Japan-Korea, I'm citing Japan-Korea because those are 2 large consuming markets, and China is also part of that. One market to the east of India, Japan, Korea, China. The other is the Western India market, which is west of India towards the Middle East. Both those prices were very high, $53.51 per million metric British thermal units, and the domestic gas price was much lower. It was 83% lower. The average price also was 69% lower. Yes, it is our constant effort to provide more gas available for domestic cooking purposes and, sir, for the transport sector, and we are committed to make the green transition. In fact, our trilemma is to ensure availability, affordability, and sustainability. And the increased gas which is being provided, we raise the gas available to the CGD sector and transportation sector by 2.5 times, 250%, sir. So I'm in agreement. We are making that, and we are ensuring that Indian gas prices are way below the market prices, global market prices. Thank you. Second supplementary. Please be brief. Sir, my second supplementary question. I would like to know from the Honourable Minister whether the government has initiated any drive for increasing the use of CNG vehicles in the country and to provide any incentive, concession, subsidy to encourage people to switch over to CNG vehicles from diesel. The total number of CNG vehicles in the country as of now, the number of CNG vehicles are expected to hit the road before 2030. Thank you, sir. Sir, there is an autonomous process of transition taking place. If you look at the number of CNG vehicles, at the time when international CNG prices went up,
there was an apprehension that people would stop buying CNG vehicles. That didn't happen. And the very fact that we can make gas available, natural gas available for the transportation sector at reasonable prices, not linked to market global prices, that itself acts as an incentive. The same is happening also with electric vehicles, but the issue of giving incentives, I think the most important incentive you can give is to make the energy which these vehicles consume available in plenty, and we are taking our overall use of gas in our energy matrix from 6% to 15%. So we are going down that, giving specific incentives, etc. Those are the subjects, I think, of other ministries. But I'm sure the honourable member is aware that that does not pertain to my ministry. Thank you. Dr. Sikandar Kumar. Dr. Sikandar Kumar. Thank you, sir. With your permission, I would like to know from the Honourable Minister of Petroleum and Natural Gas that is there any mechanism to decide the CNG prices? If yes, then what is that and how the CNG prices are determined? And secondly, what initiative the government has taken from time to time in order to stabilize the CNG prices? एक ही सवाल पूछना था, please, माननीय मंत्री. Sir, I'm quite happy to answer both because they are interlinked. Sir, the position prior to April 23 was that Indian gas prices were based on 4 hubs, namely US Henry Hub, Canadian Alberta Hub, UK NBP and Russian gas market. And the prices used to be fixed over a 1-year reference period every 6 months. Now, the difficulty with that was that these were not aligned to the Indian condition. And out of these 4 hubs, 2 of them, sir, the UK NBP and the Russian gas market, stopped operating after the one after the Ukraine-Russia war, and the other one because of the North Sea oil difficulties. So we took some very far-reaching decisions, reforms. In the month of April 23, we decided to delink the Indian gas price from these 4 hubs, and we aligned them to the Indian crude basket. In other words, 10% of the Indian crude basket. And as a result of which, we were able also to fix the prices every month, and the price of oil now has a price of gas has now a floor and a ceiling. The floor is $4 MMBTU, and the ceiling is $6.5 MMBTU. This immediately resulted in the price in the month of March coming down from March price, the April price, because we took these decisions in April, coming down drastically. Sir, we are doing many other things. For instance, the number of CNG stations has increased from 738 in 2014 to 6,159, which is a growth of 735%, sir. Sir, the area covered by CGD, which is the domestic gas availability, that has gone up, sir, from 5.47% of the national Indian national territory to 88%, and this is an increase of 1,508%, sir. The population covered by CGD in 2014 was only 12.81%. It is now 98%, and this is a growth of 665%. So whichever way you look at it, sir, the gas infrastructure, the pipelines we've laid, the amount available, all that is on the increase, sir. Thank you. Mani Shri Jawahar Sarkar. See. Mic is working नहीं पहले से mic काम कर रहा है पूछने दे please. Mike, sir, I would like to ask the Honourable Minister how much the disturbances on the Red Sea route, the Houthi and other attacks on the Red Sea route, are affecting the West Indian market of gas and petroleum crude, since he has raised the issue of $19 per barrel. Thank you. Both of them. Thank you. $0.06 I should have added per barrel as the lowest point during the economic lockdown. I'm talking about the period of 2020, I think March to 21-22.
because the global situation as a result of the pandemic was in a situation of chaos. There was no consumption, so the price came down to $19. Insofar as the developments in the Red Sea area are concerned, sir, I have been asked this question outside this august house, and my answer has always been, yes, we have a certain degree of anxiety because these are non-state actors affecting supply lines, and should those supply lines be disrupted totally. Just now, there is some rerouting taking place on account of that uncertainty, and that rerouting results in higher freight costs, higher insurance costs. But as it is, I say with my fingers crossed that we are reasonably confident that given the goodwill around, these factors making for anxiety will be contained, and we do not have an all-out escalation. Now, if an all-out escalation of hostilities takes place and there is a total supply line, I don't want to name the areas, it's very clear, then of course there would be a cause for concern. But so far the international community, their geopolitical equations and the marketplace has adjusted. When I last looked at the price of oil, it had come down, I think yesterday when I inquired, to $77 a barrel. My own feeling is that if the uncertainty in the Red Sea area, particularly the attacks by the non-state actors, if these were not to recur or not in that frequency, or most important, if they were not to escalate and exacerbate, I think this is a manageable situation. Thank you. Sri M. Thambidurai, Manyam M. Thambidurai. Deputy Chairman, sir. Minister, in his reply, he said regarding this natural gas infrastructure, in that he replied, they are going to put operational natural gas pipeline as increased. Because there is apprehension in Tamil Nadu farmers, they are opposing this kind of putting gas lines in the agricultural land because a lot of agitation taking place. Whether the minister aware that and come forward to solve the Tamil Nadu agriculture farmers must not affected put this kind of gas line through that land. Instead of that, there had been roads, national road, can bring that. You have put your question. Thank you. Sir, I am grateful to the honourable member for having raised this issue. Of course, he wants to inquire whether I am familiar with it. So I am not only familiar with it, I spend a large part of my waking day to resolve these problems. I just give him one example. I wrote a letter to the Honourable Chief Minister on 2nd October 2021. And this is just one letter I've written. Here, Tamil Nadu Chief Minister. Since you are asked a question on Tamil Nadu, I refer to them. And I said that the Kochi, Kutanad, Mangalore pipeline, KKBMPL project, was conceptualized as part of the ambitious national gas grid. This pipeline was planned to evacuate the regasified LNG from Kochi LNG terminal to transport to various consumers in the states of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka. GAIL has been entrusted to implement this. But you see, the fact that arises, the same pipeline, when it went through Kerala, 514 kilometers has been completed. It goes to Karnataka, 58 kilometers has been completed. And Tamil Nadu, 329 kilometers not completed. Now, whenever the state government is unable to implement a project in terms of the obligation it has, so we have been in constant touch with them. We received periodical assurances that they are attending to it. But as I said, sir, all the other states, Kerala done, Karnataka done, and Tamil Nadu, it's still under implementation, and we would... Please, thank you. Now, I'm coming to that. Farmers... Thank you. Thank you. Now, question number 17, Mani Sri Raghav Chadha. Mani Mantri ji. उत्तर सभा के पटल पर रख दिया गया है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय राघव चड्ढा जी। सर, मेरा पहला सवाल भारत देश के एमएसएमई सेक्टर में जो सिकनेस है उससे संबंधित है। सवाल बड़ा सरल है। वित्तीय वर्ष 22-23 में लगभग 13,000 एमएसएमई बंद हुई, जो पिछले 4 वित्तीय वर्षों में सबसे अधिक है। हम ये अगर अनुमान लगाएं कि 50 लोग
एक एमएसएमई में भर्ती होकर काम करते हैं, रोजगार लेते हैं, तो अगर 13,000 यूनिट्स बंद होती हैं तो लगभग 6.5 लाख लोगों की नौकरी चली जाती है। और एक फैक्ट और देके मैं सवाल पूछ रहा हूं कि वित्तीय वर्ष 17-18, 18-19, 19-20 में भारत देश के जितने एक्सपोर्ट्स होते थे उसका 50% हिस्सा लगभग एमएसएमई सेक्टर से आता था। आज वो 50% से घट के 44% हो गया, यानी कि एमएसएमई के एक्सपोर्ट्स भी गिरते जा रहे हैं। सवाल मेरा माननीय मंत्री जी से ये है कि जिस प्रकार से एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ तो छोड़िए, जिसमें गिरावट देखी जा रही है, उसके क्या कारण है और खास तौर पे उसका रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा? धन्यवाद। माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन पूछा है कि एमएसएमई के अंदर 19, 20, 21 और 22-23 से 3-4 सालों में जीडीपी में गिरावट आई है, ये उसका कहना है। वैसा एक्सपोर्ट में भी सर, एक्सपोर्ट में 2 साल में कोरोना के कार्यकाल और जीडीपी भी कोरोना के कार्यकाल में 2% से गिरा, बात सही है, 2% से, मगर 21-22 में फिर 29.1% वापिस इंक्रीज हुआ। अभी 22-23 में तो अबाउ 30% हो ही गया होगा। तो कोरोना के कार्यकाल में गिरावट हुई, मैं मानता हूँ। एक्सपोर्ट भी कम हुआ, वो भी मैं मानता हूँ, मगर अभी एक्सपोर्ट भी इसमें 45.83% हो गया है, तो वो भी इंक्रीज हो रहा है। इसके कारण कोरोना के कार्यकाल में देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने उस वक्त जो योजना अलग अलग दी, क्रेडिट गारंटी योजना जो उन्होंने चालू की, उसके अंदर एमएसएमई के ऊपर कम से कम 2,41,000 करोड़ जो एमएसएमई बंद हुई थी वापस चालू करने के लिए उनको पैसा दे दिया गया, लोन दे दिया गया। इससे अभी 45.83 हो गए है। अभी मैं मानता हूँ कि इसमें एक और भी है कि हमारा जीएसटी जो 19-20 में 5 लाख करोड़ था, 20-21 में कम हुआ, 4.7 लाख करोड़ हुआ था। अभी 21-22 में 5.3 अभी बढ़ गए है, पहले इतना ही हो गया, अभी इससे भी 2% एवरी ईयर बढ़ते जा रहा है। तो आपने कहा गिरावट हुई थी कोरोना के कारण, मगर अभी फिर एमएसएमई में अलग अलग योजना देकर वापिस जो उद्यमी बनते वो चालू हो गए और अच्छा उत्पादन दे रहे हैं। उसका फिगर मैं जीएसटी के माध्यम से मैं कहा। सेकंड सप्लीमेंट्री ब्रीफली, सेकंड पहले मैं जरा एक सवाल सेकंड सप्लीमेंट्री आप सवाल मंत्री जी ने जो फैक्ट बोला वो गलत बोला है, तो मैं आप उसके लिए दूसरे रास्ते हमारे राघव चड्ढा जी आप सवाल पूछे। अच्छा, मैं आगे चल, मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा। आप सवाल पूछे। एनपीएज और लोन डिफॉल्ट्स की जहां तक बात है, इस एमएसएमई के सेक्टर में ये देखा गया है कि बहुत बड़ी तादाद में जो लोन्स लिए गए, चाहे सरकार की किसी योजना के तहत लिए गए या बैंकों से लिए गए, वो लोन डिफॉल्ट हो गए, सिंपली बिकॉज वो सेक्टर पूरी तरीके से गिरता जा रहा है पिछले 3-4 वित्तीय वर्षों में। खास तौर पे भारत सरकार एक स्कीम लाई थी जिसका नाम था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी, ECLGS। इसमें सरकार की अपनी रिपोर्ट बताती है कि एक अधिकांश हिस्सा जो लोन के माध्यम से एमएसएमईज को दिया गया था वो एनपीए हो गया है, उस पे डिफॉल्ट हुआ। आपका सवाल मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस सेक्टर को पुनर्जीवित करने के लिए, जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, जो छोटा एंटरप्राइज होता है, जो गरीब लोगों को रोजगार देता है, उनकी बेहतरी के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और खास तौर पे इस एनपीए डिफॉल्ट से डील करने के लिए मंत्री जी क्या कदम उठा रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, मैं पहले कहा कि कोरोना के कार्यकाल में कई उद्यमी बंद हुए थे, कामगार भी चले गए थे। उस वक्त गिरावट जरूर थी जीडीपी में। अगर उसी तरह लोगों ने लोन भी रीपेमेंट न किया, एमपी बहुत सारे अकाउंट एमपी हो गए,
इसलिए इमरजेंसी क्रेडिट योजना 5 लाख करोड़ देश के पंतप्रधान जी ने इस डिपार्टमेंट के लिए दिए, उसमें से 2,41,000 करोड़ ये उद्यमी के लिए, और जिन्होंने का एमपीए हुआ उनको भी वापस लोन देने के लिए उसका जो लिमिट था 1 करोड़ वो 5 करोड़ तक लेके गए, उनको पुनर्जीवित करने का काम सरकार ने किया। इसलिए उत्पादन फिर बढ़ा, पहले इतना ही उत्पादन बढ़ा, कुछ घाटा नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ वो सभी इंडस्ट्री फिर चालू हो गए हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। माननीय श्री एस सेलंगवेथी, माननीय श्री एस सेलंगवेथी, एस सेलंगवेथी, प्लीज। Honorable Chairman, sir, there is a survey has been conducted recently with input from 2,600 formal MSMEs from 5 states and Union Territory of Puducherry. One of the two surveyed MSME want an instant line of credit, but the non-availability of the short-term credit is the biggest hindrance for the MSMEs. So I would like to request our Honorable Minister to look into the demand and request of the MSMEs. Thank you. सर, सभापति महोदय, क्रेडिट गारंटी के माध्यम से जो उद्यमी बंद हुआ उनके लिए लोन की भी व्यवस्था की गई, मदद भी की गई है। मैं समझता हूँ जहाँ भी और भी उद्यमी को दिक्कत है उनको हेल्प करने के लिए पीएमजीप से लेकर अलग अलग 8-10 योजना है, उनके माध्यम से हम मदद करेंगे। मगर इंडस्ट्री देश का एक्सपोर्ट बढ़ाते, जीडीपी बढ़ाते, आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए मैं समझता हूँ जो भी करना इंडस्ट्री के लिए उसके लिए हमारे पंतप्रधान तैयार है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि 5 लाख करोड़ इस डिपार्टमेंट के लिए इंडस्ट्री के लिए दिए है, उसमें हम वो जो हमारे सदस्य ने कहा उनको हम मदद करेंगे। माननीय शक्ति सिंह गोयल। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं आपके जरिए मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्योंकि जो रिटर्न आंसर दिया है उसमें कहा है कि एमएसएमई ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए इन ऑल इंडिया जीडीपी, वो जो आंकड़े दिए हैं 2019-20 में 30.5% था, 20-21 में 27.3% था, 21-22 में 29.1। इट मीन्स अगर मंत्री जी कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से हुआ तो कोरोना की सबसे ज्यादा इंपैक्ट 19-20 में होनी चाहिए, तब तो 30.5% था। कोरोना की इंपैक्ट उसके बाद नहीं हो सकती है 21 में 22 में, तो वो कम क्यों हुआ? और आप सिर्फ बड़े उद्योग की चिंता करेंगे तो लघु उद्योग का क्या होगा? धन्यवाद। प्लीज प्लीज। भाई साहब, लघु उद्योग की संख्या जो बंद हुई वो फिर सभी चालू हो गए, चिंता की बात नहीं, फिर सभी चाहिए। इसलिए उत्पादन में जो जीएसटी आपको पढ़ के बताया, आज भी 5.3 लाख करोड़ है, कम नहीं हुआ है। जो पहले 19-20 में था 5 लाख करोड़, वो अभी बढ़ गए है। और इसमें मैं कहता हूँ 20-21 में 27.2 वो कोरोना का कार्यकाल है, कोरोना का कार्यकाल। और जब भी कामगार फैक्ट्री छोड़ के भागे थे, छोड़ के गए थे, तो अभी फैक्ट्रियां चालू होने के बाद अभी 21-22 में वो प्रमाण जीडीपी का बढ़ गया है। और इसलिए बढ़ने के कारण अभी पूर्ववत परिस्थिति निर्माण देश में हुई है एमएसएमई के बारे में। labor welfare and employee wellness in the MSME sector. धन्यवाद। Sorry, repeat. Please. माननीय कार्तिकेय शर्मा जी सवाल पूछें। I would like to ask the Honorable Minister about the steps taken to ensure labor welfare and the employee wellness in the MSME sector. Thank you. सभापति महोदय, काफी कदम
उठाकर ये इंडस्ट्री को मैं फिर से चालू करने की कोशिश हुई। मैं सभी आपकी अनुमति हो तो मैं सभी पढ़ के बताता हूँ। आप ब्रीफली बता दें, ब्रीफली बताएं। निर्यात में एमएसएमई के हिस्सेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धकता को बढ़ाने के लिए सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम तहत व्यवसाय की सुगमता और संवर्धन और क्रेडिट की उपलब्धता में सुधार के विभिन्न पहल। माननीय मंत्री जी प्लीज माननीय मंत्री जी, आप जो सवाल है कि प्लीज आप सवाल ये है कि वर्कर्स के वेलनेस के लिए, वेलफेयर के लिए क्या काम हो रहा है? क्या के लिए? वर्कर्स के वेलनेस और वेलफेयर के लिए क्या काम हो रहा है? माननीय सदस्यगण प्लीज। नहीं, आप सुनिए प्लीज सर। प्लीज सर, ये मैं पढ़ के बता रहा हूँ। वो उद्यमी चालू होने से वर्कर का प्रॉब्लम हल होगा। ऐसा नहीं विदाउट फैक्ट्री बंद रहेगी तो हल होगा ये प्रॉब्लम। वर्कर्स के वेलनेस वेलफेयर के लिए क्या काम हो रहा है, आप माननीय सदस्य को बुलाकर बता देंगे प्लीज। ठीक, प्लीज बैठ जाए आप। क्वेश्चन नंबर 19 श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार। कनक मेदला रविंद्र कुमार नॉट प्रेजेंट। अच्छा, माननीय मंत्री जी श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सप्लीमेंट्री। as per section 90 of the AP Reorganization Act 2014. It's question number 19. Let him ask, please. Do not interfere, Mr. Gokhale. Please take your seat. Take your seat. Please. Please, I will come to that. Yes, it's good. I'll come. Please. I'll come back. Please. Sir, as per section 90 AP Reorganization Act 2014, Polavaram irrigation project was declared as a national project. It will come back. Please, I'll come to 18. After this, I'll come to 18. Please. Please. Sir, from 2020 till today, no progress has taken place. And as per Polavaram project, how much time to complete the project it will take? Thank you. माननीय सभापति महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत भारत सरकार ने बनाने की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन मैं माननीय सदस्य और सदन के संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि इसके निर्माण की जिम्मेदारी आंध्र प्रदेश की सरकार के पास में। निर्माण का काम करना, उस पर पहले खर्च करना, ये सारी जिम्मेदारी आंध्र प्रदेश सरकार की है। भारत सरकार मात्र उसकी वित्तीय सहायता और संसाधन उपलब्ध कराती है। कार्य प्रगति पर है। और माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उन डिफरेंट कंपोनेंट्स में जो काम अब तक हुआ है, उस काम के अनुरूप अलग अलग जो 8 तरह के कंपोनेंट्स इसमें हैं, उन सब की जानकारी अब माननीय सदस्य को मैं व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करा दूं। One second. Said, honorable members, we will take question number 18, not an occasion to be agitated. Sometimes human error. Sir, one second. Supplementary hogi, sir. Second, sir. Question number 19, second supplementary. Sir, I'll come to question number 18. Would you please take your seat? Would you please take your seat now? Ma'am, please, 1 second. It's a very good point that a question should not be skipped.
Is there anyone in the House who has not heard once? We are here to make immediate rectifications. Question number 18 will be taken for sure. Let us first go through question number 19. Second supplementary. Human error. 1 second. It was just it slipped through the computer. It went ahead. And I corrected it that I will come to 18. Please. I already have spoken, madam. Please. Please, ma'am, these will not go on record. Ma'am, your observations will not go on record. I'm so sorry. These are intemperate observations. Sorry, absolutely. Please, absolutely, no. House. कौन सी सेकंड सप्लीमेंट्री हो गई? सेकंड सप्लीमेंट्री श्री कनक मेडला Sir, second supplementary. Supplementary, sir. Sir, the Honorable Minister has stated some... I'll come to that, ma'am. Nothing will go on record. Progress of the work is going on. But, sir, how much progress from 2022 till today taken place? How much is the amount invested for that purpose till today? Honorable Minister. Please. Madam, please, no cross talks. No, please. No, nothing will go on record. Nothing will go on record. Yes, Honorable Minister, please continue. Only what the Honorable Minister say will go on record. जैसा माननीय सदस्य ने जानना चाहा है, Honorable Minister. और मैंने कुछ पहले सप्लीमेंट्री के प्रत्युत्तर में भी निवेदन किया था कि पहले खर्च करने की जिम्मेदारी रिस्पांसिबिलिटी टू मेक एक्सपेंडिचर्स is the onus of state government, and after spending the money on different components of construction, the state government raises the bill with PPAP, Polavaram Project Authority, and then it comes to the government of India. But for the sake of answering the question which has been asked by Honorable Member, I wish to submit that in 2021, 2,234 crores have been released to PPA, and the same amount has been released to Government of Andhra Pradesh as reimbursement by PPA. In 2021-22, 751 Mr. crores Shakti Singh Gohil, 47 crores take have your been seat. released. Dipender Hooda, you are getting used to creating chaos unnecessarily. 1,671.323 crores have been released to PPA, and further PPA released the same amount to Government of Andhra Pradesh. Take your seat. In current financial year, What word are you using? 2024, so far, No. I am surprised. 7 crore rupees have You been are released using these kind of words in this by house. Government of India to Polavaram These are Project expense. Authority, Expense. and a similar amount Sorry. has been transferred by Take your seat. Polavaram I'll come Project back. Authority I'll come back to Government you of after Andhra this Pradesh. question is over. Please take your seat. I'll come back to you. I'll come back. Take your seat. Nothing will go on record. You are not her spokesperson. She herself is a very senior member. No, you don't have to support her. She's a very senior member. Sorry. Please continue. Honorable Minister. Doctor, 1 second. Take your seat. Take your. Would you take your seat? Should I name you? Mr. Dipender Hooda, I will name you. Please. No. What do you mean by it? Sit down. Honorable members, please take your seat. Rao Saab, on your seat. Take your seat. I have already indicated
that after I am through with question number 19, I will take up this issue. When we will take up this issue, we will take up this issue in a composed manner, try to find a way out. Jaya Bachchan ji is a very senior member. If she has a sentiment that is bound to be very serious with me, let me go through question number 19, then I'll come to question number 18 and the concerns that are being raised. Please. Dr. C.M. Ramesh. Sir, I have gone through the answer. This diaphragm wall was damaged in 2020. Now we are in 2024. Have you not understood me? I can't help you. Sorry. Please continue. This is very important for Andhra Pradesh. When it will be completed, when the diaphragm wall details will come, only the diaphragm wall damage since last 4 years. The 4 years the project is stalled, sir. When it will be completed, when the diaphragm wall details, national agency, international agency, when they will give? Honorable Minister. जो माननीय सदस्य ने कहा है कि डायफ्राम वॉल 2020 के बाढ़ के समय में डैमेज हुई थी, लेकिन जब उस पर काम करना प्रारंभ किया था और ये विषय संज्ञान में आया, उसके बाद भारत सरकार के नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के जो है विशेषज्ञों ने जाकर के वहाँ इस विषय पर पूरा अध्ययन किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। 2 तरह के ऑल्टरनेटिव्स उसमें दिए गए थे कि एक जो एग्जिस्टिंग वॉल है उसी को रिपेयर किया जाए और दूसरा जो था कि नई डायफ्राम वॉल बनाया जाए, क्योंकि डायफ्राम वॉल किसी भी बांध की स्पाइन या रीढ़ की हड्डी के जितनी इंपॉर्टेंट होती है। इस विषय में कहीं भी कोई, क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑलरेडी लिख करके दिया है कि जो कंसेशनर है, जो कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी है, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट कि अगर इसको रिपेयर किया जाए तो ये बांध के भविष्य को लेकर के उचित होगा या नहीं। हमने इंटरनेशनल एजेंसीज को हायर किया है और उसकी प्रक्रिया प्रारंभ की है। उसकी रिपोर्ट आने के साथ ही इस दिशा में, क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है और इसमें किसी भी तरह की जल्दबाजी बांध के भविष्य को लेकर के एक जो है समस्या हो सकती है, इसलिए उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और शीघ्र ही उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर फौजिया खान। Sir, is it true that the World Bank has come with a report that has indicated that by 2030 per capita water availability in India will shrink to half and push the country into water scarce category from the existing water stress category? Sir, in Marathwada in Maharashtra, this is a water scarce area, and what measures are proposed to augment the regulation and storage capacity of the Jaikwadi Dam to alleviate the water scarcity in the Marathwada region and bridge its divide with the North Maharashtra? Honorable Minister. महोदय, हालांकि मूल प्रश्न पोलावरम से संबंधित था, लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी आज़ादी के समय में जितनी थी उससे घट करके निश्चित रूप से कम हुई और उसके अनेक कारण हैं। वर्ल्ड बैंक की जिस रिपोर्ट की माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, उनके उसमें कितना तथ्य और उन्होंने किन विषयों के आधार पर या किस अध्ययन के आधार पर वो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, मैं उसके विषय में नहीं जाना चाहता विस्तार से, लेकिन इतना अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि जो है 2030 तक या 2050 तक भी जिस तरह की चिंताजनक स्थिति की कल्पना माननीय सदस्य ने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के आधार पर की है, वैसी स्थिति नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दृष्टिकोण से कि देश की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए पानी की उपलब्धता को हम सुनिश्चित कर सकें और आने वाले समय में भारत जिस तरह से 2047 तक विकसित होने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है, उसमें पानी की आपूर्ति कहीं बाधा न बने, इस दृष्टिकोण से पानी का विषय जो अलग अलग मंत्रालयों में अलग अलग विभागों में जो है निर्णय किया जाता था, उसको एक साथ मंत्रालय बनाया गया और पानी के परिप्रेक्ष्य में जितने तरह के जो है कंपोनेंट्स हैं उन सब पर भारत सरकार अलग अलग जगह पर अलग अलग दिशा में काम कर रही है। उसमें अनेक उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त हुई हैं। धरातल पर पानी रोकने के दृष्टिकोण से भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हमने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है और भारत की सबसे ज़्यादा निर्भरता, विश्व में सबसे ज़्यादा निर्भरता जो है वो भूगर्भ के जल पर है। और मैं माननीय सदस्य के लिए और सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह के एफर्ट्स पिछले 10 साल में लिए गए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बार बार इस विषय पर चर्चा की गई, देश में इस तरह का वायुमंडल बना
पानी के रिचार्ज को लेकर के जो वायुमंडल बना, उसके चलते हुए मैं प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं कि जो भूगर्भ के जल का स्तर निरंतर देश में गिर रहा था, हमने हर साल का अध्ययन करना प्रारंभ किया है। पिछले 4 साल से पहले वो स्थिर हुआ था और अब अपवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ है। जहां पानी की कमी हो रही थी हर साल, वहां अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में आखिरी रिपोर्ट आने तक, पिछले साल की रिपोर्ट में भी और इस वर्ष की रिपोर्ट में भी अपवर्ड मूवमेंट हुआ है। हमारे सेफर ब्लॉक्स और ओसीएस कैटेगरी के जितने ब्लॉक्स थे उन सब में इंप्रूवमेंट हुआ है और 10% से ज़्यादा ब्लॉक्स जो हैं वो हमारे ओसीएस कैटेगरी से बाहर निकल करके सेफर जोन्स में आए हैं। मैं ये नहीं कहता कि यह संपूर्ण सफलता है, लेकिन जिस दिशा में हमने प्रयत्न किए हैं, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उसके परिणाम स्वरूप उपलब्धता, भूगर्भ के जल की उपलब्धता की दिशा में हम सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ पाएं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जिस तरह से सप्लाई साइड मैनेजमेंट के साथ साथ में डिमांड साइड मैनेजमेंट पर पहली बार अटल भूजल योजना के तहत काम करना प्रारंभ किया है, उसके परिणाम भी अब दिखाई देने लगे। लेकिन निश्चित रूप से ये, क्योंकि संविधान की व्यवस्था के अनुरूप राज्य सरकारों का विषय है, राज्य सरकारों को इस पर और अधिक गंभीरता और प्राथमिकता के साथ में काम करना पड़ेगा। पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो, उसके लिए सबसे बड़े उपभोगकर्ता कृषि क्षेत्र में हम पानी के उपभोग को किस तरह से कम कर सकते हैं, इस पर राज्य सरकारों को समन्वित दृष्टिकोण से प्रयास करना पड़ेगा। श्री GVL Narasimha Rao. Thank you, Chairman, sir. Sir, this question relates to Polavaram irrigation project in Andhra Pradesh. And a number of irrigation projects in Andhra Pradesh have been languishing, and what projects which state government was required to undertake have not been done for 60 years. I'd like to congratulate and compliment the government and Honorable Prime Minister Modi ji for sanctioning huge amount of funds for Polavaram irrigation project as a central project, national project. I'd like to ask the Honorable Minister the amount of money that has been released so far under Polavaram irrigation project, and I have requested in the past to name it as Pradhan Mantri Modi Polavaram irrigation project, because this project, every rupee on this project is being spent by the central government. So I would like Honorable Minister to respond to my appeal to name it as Pradhan Mantri Polavaram irrigation project, and whether central government will take over the construction of the project, because the state government has not been moving fast Honorable enough Minister. in completion of the project. Thank you, sir. Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है कि अब तक भारत सरकार ने इस पर कितना खर्च किया है, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 2014-15 में जब इसे भारत सरकार ने नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में मान्यता दी थी, तब से लेकर के अब तक 15,146 करोड़ रुपए की वित्तीय एलोकेशन भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की दिशा में दे चुका है, जो आंध्र प्रदेश सरकार को भारत सरकार की तरफ से दिया गया। Honorable members, I'll now take question number 18, which could not be taken on account of certain technical situations. But I would like to reassert that we have in Harivansh ji a man of impeccable credentials, a man of great integrity. Human failure is something which is associated with all of us. If it has hurt someone, I take the responsibility, but I will indicate to all of you, think within, we could not have had a deputy chairperson with more sterling qualities, independence more than I have, and respect for all the members. It was slightly hurtful for me that some reflections came to be made about such a person. If there are some hard feelings, we need to forget about it. Dr. Anil Sukhdev Rao Bonde, question number 18. All right. I'll give floor to Jaya Bachchan ji. And I would request Jaya Bachchan ji. Thank you very much. Jaya ji, 1 second. You are a very senior member. Ji. Even otherwise in the country, whatever you say is looked up to and well regarded. So you will cheer us, all of us. अच्छा सर, मुझे बोलने तो दीजिए, आप ही बोलेंगे। And I am sure a great actor like you must have taken money retakes also.
सर, money retakes. सर, डेप्यूटी चेयरपर्सन के लिए बहुत रिगार्ड है और आज से नहीं, बरसों से उनकी बहुत इज्जत करती हूं। उनके बारे में हमने कुछ नहीं कहा। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप कहेंगे हम बैठ जाएंगे, डेप्यूटी चेयरमैन कहेंगे हम बैठ जाएंगे, मगर कोई और सदस्य हाथ हिला के अगर हमें बोले तो हम नहीं मानेंगे। दिस इज आवर राइट टू क्वेश्चन। You tell us कि ये सवाल नहीं ले सकते. There are problems. We'll take it later. We understand. We are not school children. But treat us respectfully. Point made. Thank you. Honorable members, I think no one will disagree with the sentiment. The House is under the control of rules and the person presiding. And I am sure everyone will follow. This is a good manner, this side or that side. The members must not exchange interest. Everything has to be through the chair. Question number 18, Dr. Anil Sukhdev Rao Bonde. Not present. Honorable Minister. The table of the House. Supplementary, Saket Gokhale. Thank you, sir. So my question is, in the interim budget 2024 that was presented by the Honorable Finance Minister, allocation for the UDAN scheme has been slashed by 60%, 60%. Of the 1,300 valid routes allotted under UDAN 5.0, 501 routes have been cancelled already. So my question is, sir, why has the budget for UDAN been reduced by 60% from 1,244 crores to just 850 crores? And number two, what steps are being taken to revive the 501 cancelled routes which are allocated under UDAN 5.0? Honorable Minister. Question is on budget, but let me clarify. Where UDAN scheme is concerned, 529 routes are already operational. No route has been cancelled. There is a system in place by which the routes are allocated. And I'll state the system is as follows. There is a valid bidding that is done. Airlines are called to bid for a particular route. If an airline bids for a particular route, that route is allocated to it. Based on this, an underserved or unserved airport is made up in terms of whatever facilities are required by the AAI so that the flights can take place from that particular airport. Now, if that airline walks away from that route, the bidding takes place again in the next round of bidding. So there is no route which has been allocated, no route which has been cancelled. It all depends on bidding and the aircraft. Sir, will you please... Not a good... Please, let the minister complete. What is this? Mr. Gokhale, 1 second. Is it according to rules? You don't hear the minister out? Please. You must maintain some decorum. Let the minister complete. If you still have an issue, rules provide for a mechanism. Please, Honorable Minister. And there is no pre-allotment of routes anywhere. I'd like to underline that aspect. The airlines, if they walk away from a particular route, after a particular period of time, that route is bid again. An airline has 2 years to start a particular route. If it doesn't start a route, it goes into the next bidding. And therefore, that route remains unutilized till the time the next bidding takes place. Vandana Chauhan, please. Vandana Chauhan. Sir. Vandana Chauhan. Will you first take your seat? First, 1 second. Will you first take your seat? First, no, I am saying take your seat. First you take your seat. Is it the way to conduct proceedings? Sit down first. Sit down first and listen to me. If a minister responds to a question and if an honorable member, for one reason or the other, is not satisfied, that could be on several grounds. One, not understanding the person of the minister, or the minister not responding adequately. In both the situations, it is not the mechanism to jump on the chair. One second. Sit down.
You still don't understand. I'm sure senior leaders of your party will persuade you to maintain decorum. Vandana Chauhan. Thank you, sir. Sir, every airport is supposed to have proper maintenance and service delivery for its commuters, sir. I would like to raise the question, particularly in the case of Pune Airport, which I've raised several times in this House. So the Pune Airport has been seeing deteriorating quality, and the rank has been slipping down lower and lower. Now it is 17th position in a survey conducted by the Airport Council International. So I would like to ask the Honourable Minister, what are the steps being taken for such slipping down ranking airports, and particularly for the Pune Airport, which is still to see the light Honourable of the day, Minister. actually. We are still using the Air Force Airport. Overall question does not pertain to maintenance of airports and all other things. Nevertheless, I noted this point, and I'll convey to the member as to what action has been taken. Shri Rajiv Shukla. जी, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि महाराष्ट्र राज्य में शिरडी नामक बहुत जो है धार्मिक स्थल है, जहाँ बहुत लोग जाते हैं, शनि शिंगणापुर के लिए भी जाते हैं। वहाँ की अभी तक जो है जो एयर सुविधा है, पहले तो थी नहीं, अब कुछ एयरपोर्ट बनाया, बहुत कम फ्लाइट की सुविधा है, जबकि लाखों लोग उत्तर भारत से वहाँ जाते हैं। तो शिरडी के लिए वो क्या सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, कृपया ऑनरेबल मिनिस्टर करेंगे। चेयरमैन सर, दी शिरडी का एयरपोर्ट जो है वो महाराष्ट्र सरकार के नीचे है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नीचे नहीं है। और जो भी फ्लाइट जितनी भी बनती हैं किसी भी एयरपोर्ट के लिए या किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो एयरलाइंस के ऊपर निर्भर करता है। एयरलाइंस कहाँ से कहाँ पर ले जाना चाहते हैं, अपने रूट को देखते हुए, अपने हवाई जहाज़ों को देखते हुए, अपने खर्चे को देखते हुए, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। हम जैसा कि मेंबर ने कहा है, उसके लिए अलग अलग एयरलाइंस को बोला जाएगा। अगर वो इसके अंदर और इजाफा करना चाहते हैं नंबर ऑफ फ्लाइट्स के अंदर, उनको बता दिया जाएगा। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। सो मच सर, मेरा सवाल पुणे से जुड़ा हुआ है और शिरडी को लेकर जुड़ा हुआ है। पुणे के ओल्ड एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल 5 महीने से तैयार है, पर उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, तो इसमें ये डिले क्यों हो रहा है? दूसरी बात, हमारी जब सरकार थी तब हमने एक नई बिल्डिंग प्रपोज की थी, उसको इन्होंने स्क्रैप कर दिया, क्योंकि ये महाराष्ट्र का ही सवाल है, इसलिए महाराष्ट्र तक ही सीमित रख रही हूँ सर। शिरडी का भी अभी कहा गया कि वहाँ योर सप्लीमेंट्री सर, ये पुणे और शिरडी का कहा गया राज्य सरकार के अंतर्गत है, तो राज्य सरकार की आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? सिविल एविएशन उनसे सवाल नहीं पूछ सकता? योर सप्लीमेंट्री सर, supplementary is this. Why is a new airport terminal All right, not Honorable being Minister. inaugurated? Why is it waiting for an inauguration for 5 months? पुणे के इनॉग्रेशन के लिए 5 महीने का इंतजार नहीं हो रहा है, वहां पर काम चल रहा है, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, श्री सुजीत कुमार। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। सप्लीमेंट्री 1, श्री सुजीत कुमार। सर, टेक फॉर ट्राइबल करके एक बहुत सुंदर इनिशिएटिव एमएसएमई मिनिस्ट्री ट्राइफेड के कोलैबोरेशन में शुरू किया था। सर, ये इनिशिएटिव जो ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका आईटी स्किल, उनका बिजनेस स्किल्स और सॉफ्ट स्किल बढ़ाने के लिए सर ये शुरू किया गया था। मैं जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से, ये इनिशिएटिव का प्रोग्रेस क्या हुआ है, कितने ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स इससे लाभ उठा चुके हैं और इसको आगे कितने सालों तक चलाएंगे? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, विशेष रूप से इन्होंने जो बात की है उसके लिए एसटी के लिए, ये जितनी भी योजनाएं एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही हैं पूरे देश के लिए चलाई जा रही हैं और विशेष रूप से पीएमईजीपी जो योजना है उस योजना के माध्यम से हम लोग जो छोटे छोटे लोग हैं उनकी मदद करते हैं। उस योजना के माध्यम से अगर देखा जाए तो किसी भी तरीके से हम लोग देखते हैं तो भारत में पूरे देश में जो हम लोगों ने सब्सिडी अगर गरीबों को दी है तो 2.4 हज़ार करोड़ रुपए दी है और इसमें जो योजनाएं हैं वो करीब 65,000 योजनाएं हैं जिनमें हम लोगों ने मदद की है और उसी तरीके से रोज़गार अगर दिया है तो 5,52,000 लोगों को रोज़गार दिया गया है। वो विशेष रूप से जो पीएमईजीपी योजना है सर, ये ग्रामीण के लिए और शहरी के लिए
इन दोनों में सब्सिडी का अलग अलग प्रावधान किया गया है। अगर शहरी कोई एरिया है और जनरल लोग हैं तो उसे 15% की सब्सिडी दी जाती है, और यदि वो ग्रामीण में है तो 25% की सब्सिडी दी जाती है। यदि कोई SC ST है, यदि वो शहर में रहता है तो सर उसे 25% की सब्सिडी दी जाती है, और यदि वही ग्रामीण में रहता है तो उसे 35% की सब्सिडी दी जाती है। इस तरीके से इस योजना का क्रियान्वयन पूरे गांव में, पूरे देश में किया जा रहा है। अब इन्होंने विशेष रूप से जो पूछा है, आज हम उड़ीसा के बारे में जो हम लोग यहाँ सब्सिडी लेके आए हैं, करीब 69 करोड़ रुपए हम लोगों ने उड़ीसा में सब्सिडी दी है, और विशेष रूप से इस परियोजना में करीब 2100 परियोजनाओं को हम लोगों ने क्रियान्वित किया है, और करीब 17,500 लोगों को इसमें रोजगार मिला है। सेकंड सप्लीमेंट्री सवाल पूछा था सुजीत कुमार सर, मैंने सवाल पूछा था टेक फॉर ट्राइबल्स जो स्कीम है उसके बारे में, PMEG के बारे में नहीं पूछा था सर, लेकिन मैं उनसे बाद में आंसर ले लूँगा। सर मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है सर, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का एक रिपोर्ट आया था 2022 में। उस रिपोर्ट में सर दर्शाया गया है कि जो MSMEs हैं उनका सर क्रेडिट गैप है 20 से 25 लाख करोड़ रुपया, और सर ये तो जनरल सर MSMEs के लिए, ट्राइबल लेड MSMEs या ट्राइबल लेड एंटरप्रेन्योर्स, इनका क्रेडिट गैप सर क्लोज टू 90% है। तो सर मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि जो ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटी सर अवेल करने के लिए क्या क्या स्कीम सर। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से ट्राइबल जो हमारे लोग हैं उनकी मदद के लिए, और पूरे देश में जो हमारी MSME की योजनाएं हैं वो पूरे सभी के लिए विशेष रूप से चलाई जा रही हैं। विशेष रूप से हम लोग देखें तो आज हम लोग TC बना रहे हैं, पूरे देश भर में टेक्निकल सेंटर बना रहे हैं, वो करीब 53 टेक्निकल सेंटर हैं, वो 20 नए बना रहे हैं, जिससे 125 करोड़ की लागत से पूरे देश भर में बनाए जा रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग देखें एक्सटेंशन सेंटर बना रहे हैं, 100 करीब वो 10 करोड़ की लागत से बना रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने 6000 करोड़ का बजट रखा है। विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ कि हमारी विश्वकर्मा योजना है जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर को लागू की है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना लागू की है, उसके लिए भी गरीबों के लिए है। ये उन गरीबों के लिए है जो छोटे छोटे लोग हैं और 18 प्रकार के ट्रेड में जो घर बैठे काम करते हैं, उनके लिए करीब 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और उसमें अभी तक रजिस्ट्रेशन जो हुआ है वो करीब 88 लाख का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और आगे भी ये रजिस्ट्रेशन बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। आज मैं कह सकता हूँ कि जितनी भी हमारी सारी चीज़ें हैं, EDB योजना, स्फूर्ति योजना, SC ST हब, ये सब गरीबों के लिए योजनाएं हैं, उनके लिए ये काम कर रहा है। डॉक्टर शांतनु सेन। Sir, through you, my supplementary question on MSME to our respected minister is, though as per national record, West Bengal ranks second in MSME, where we are having nearly 90 lakhs of MSMEs and we have created nearly 136 lakhs of employment through that. My question is, instead of getting proper cooperation, these non-BJP ruled states, why they are being looked after with stepmotherly attitude, sir? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं माननीय सदस्य को कि किसी के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया जा रहा है। ये योजनाएं पूरे देश में चलाई जा रही हैं। जो भी योजनाएं हों, चाहे हमारी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हो, चाहे हमारी जो प्रधानमंत्री अभी विश्वकर्मा योजना हो, और जितनी भी योजनाएं हैं, वो सारी योजना का क्रियान्वयन बड़ी तेजी के साथ किया जा रहा है। इन्होंने अपने बात की है, वेस्ट बंगाल की बात की है, विशेष रूप से वहाँ जितने भी हैं उन्हें सारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है। विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ कि आज की स्थिति में वेस्ट बंगाल में PMEGP के अंतर्गत जो लाभ इन्हें मिल रहा है, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, चूँकि पश्चिम माननीय सभापति महोदय, ये प्रश्न जो है ओडिशा का है, ये डिटेल सब मांगा है ओडिशा का। MSME के बारे में अलग अलग स्कीम का इन्होंने डिटेल मांगा है, ये पश्चिम बंगाल का नहीं है।
तो बंगाल के लिए वो अलग प्रश्न पूछे, हम डिटेल में इसके बारे में आंसर देंगे। डॉक्टर फौजिया खान। Sir, given the initial challenges faced by MSMEs in setting up digital assets and ensuring cyber security, it is essential for them to enhance understanding and integration of cyber security measures. MSMEs, sir, are facing capital constraints, struggle with a shaky technology base, hindering growth and recognition. In addressing these issues, what measures does the ministry propose to make MSMEs more reliant on technology and overcome growth bottlenecks and add to the economy in full potential? Question hour over. Bills for introduction. Discussion. Further discussion on the motion moved by Mrs. Kavita Patidar on 2nd February 2024 and the amendments thereto. Sri Swendu Sekhar Ray. Thank you, sir. At the outset, I would like to respectfully submit that in the address to the both houses of Parliament by the Honourable President of India, I have found after Ek Bharat, Shrestha Bharat and Atmanirbhar Bharat some new coins like Viksit Bharat, used at least 6 times, and Amrit, expressed for about 10 times, such as Azadi Ka Amrit Kal, Amrit Kal of our independence, Amrit Kalash, Amrit Sarovars, Amrit Mahotsav twice, Amrit Batikas, Amrit Bharat Station, Amrit Bharat Train, Amrit Generation. So, चारों ओर सिर्फ अमृत ही अमृत है। जो लोग ये अमृत पी रहा है, उनका बात छोड़ दीजिए। जो लोग हलाहल पी रहे हैं, जो लोग हलाहल यानी कि जहर पी रहे हैं, उनके लिए ये बहुत सोच की बात है कि ये अमृत लोक में बात कर रहे हैं, ये अमृत लोक में जीवित है या दूसरा कोई परलोक में तो नहीं चले गए। अमृत लोक सुनते सुनते उनका परलोक का याद आ रहा है। सर, it is a make-believe situation. How it has been coined like Amrit Kal everywhere, every sphere of life, of the society, I do not understand. Anyway, it's a prerogative of the government. At page 3 of the pointed booklet, it is said, quote, last year my government has given government jobs to lakhs of youth in mission mode, unquote. So it is not in the distant past we heard about that 2 crores of jobs will be given to jobless per year. And by this time, the number ought to have been 20 crores because this government has already spent 10 years in power. Now the question is, when it is said that lakhs of jobs, the natural question comes that how many lakhs? There is no mention about this. How many jobless were there? And out of how many jobless were given, how many lakhs of jobless were given jobs? And how many remaining? These are the pertinent questions which have not been addressed by the Honourable President, which has a speech which has been prepared by this government.
So, should we take it as another Jumla? Sir, it is said in page 4 of the speech that government enacted important legislations with the cooperation of all parliamentarians, including that draconian law, Nyaya Sanghita, which according to me is Anyaya Sanghita. Anyway, but this claim that all parliamentarians supported the bills when it was introduced and discussed, this is not true. This is incorrect information. Why? And as a keen reader of history, it reminds me to a situation in the year 1933 when Hitler in Germany, he brought one enabling act which will enable his cabinet to legislate instead of the parliament, and for which no presidential assent will be required. And what happened? The law was passed. It is called enabling law. It was passed in Hitler's regime in Germany in 1933 after sending 106 parliamentarians to concentration camp. Thereafter the bill was passed. Here we have seen that after suspension of 146 parliamentarians, these bills were passed. And the number 146, suspension of 146 parliamentarians in Indian Parliament, is the highest ever in the history of parliamentary democracy around the world so far. Therefore, the statement made in the Honorable President's speech, I should not say that it is far from truth, but it is incorrect and purposefully given by the government to create a confusion in the minds of the people. Sir, in page 6, paragraph 9 of the speech, Niti Aayog claimed that about 25 crore countrymen have been lifted out of poverty in the last 1 decade. That is during this Amrit Kal. My question is that out of how many poverty-ridden people 25 crore have been lifted out of poverty as claimed by Niti Aayog? What was the exact number of poverty-ridden people when they came to power in 2014? And out of which, when they say the 25 crore have been lifted out, how many remaining? These questions have not been addressed. Therefore, all these are half-truths. I am sorry to say. In this way, a series of lofty claims have been made in this report card of the government to carry out disinformation campaign on the eve of the Lok Sabha election. Reality is altogether different, sir. Madam, I would like to refer to Article 39 of the Constitution, Clause B. It says categorically, it is under the directive principles of state policy. The state shall, in particular, direct its policy towards securing that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good. And Clause C says, you are aware, Madam, very much. Clause C says that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment, unquote. Now, what is happening?
what is the scenario of Indian economy, inequality has gone to what extent, I may kindly be permitted to refer a few points from the Oxfam Report 2023, which was released in January this year, 15 January this year. The government does not accept that report, but we put very much reliance on this report because of the practical situation in the country. Number one, the richest 1% in India owns more than 40% of the country's total wealth. Number two, the bottom half of the population shares just 3% of the national wealth. Number three, Indian government recently cut taxes on corporation while introducing a centralized tax system, that is GST, that led to increased indirect taxation of households. A one-time 2% tax on billionaires' entire wealth would support to rupees 40,423 crore for malnourished individuals for the next 2 years, and you are giving concessions to the corporates. Next, female workers earned only 63 paisa for every 1 rupee a male worker earned. Scheduled caste and rural workers earn significantly less than advantaged social groups. This is very much pertinent, Madam. This point, billionaires in India witnessed a 121% surge in wealth since the pandemic began. Until November 2022, this is going on, the surge of their wealth. And during pandemic, it was 121% surge. One particular Indian billionaire, whose portfolio includes energy companies, has seen his wealth soar by 46% in 2022. 64% of the total GST came from the bottom 50% of the population in 21-22. Total number of billionaires in India increased from 102 in 2020 to 166 in 2022. India's 100 richest combined wealth reached $660 billion, that is, in Indian currency, 54.12 lakh crore. This is the economic inequality which must be resisted as per the dictum of the Constitution as enshrined in Article 39 B and C. In India, 72 TV channels reaching over 800 million people are owned by one particular billionaire. In India, a one-off tax on unrealized gains from 2017 till 2021 from just one billionaire would have raised $21.95 billion, enough to employ more than 5 million Indian primary school teachers for a year. Such a huge economic inequality, and we are chanting the mantra of Amrit Kal, Amrit Mahotsav, and Amrit, Amrit, Amrit. Sir, Madam, forget about Oxfam report, because government does not believe in that report. But UNDP report, in regard to Asia Pacific Human Development Report of 2024, released on 15th of January this year, what does it say? Only 3-4 bullet points. In India, income distribution has become more skewed, with the top 10% of the population getting 57% of national income, UNDP report. The top 1% get 22% of the national income, indicating one of the most unequal income distribution. Top 10% of the population control 65% of the nation's total wealth, highlighting significant wealth inequality. Growing evidence of a strong rise in wealth inequality, particularly in the post-COVID period. Finally, from UNDP report, women constitute only 23% of the labor force
and certain groups like informal workers and interstate migrants are at greater risk of falling back into poverty. My submission is that unless this huge inequality is removed on war footing, one cannot rule out the possibility of social unrest or upheaval. Now, the rural wage rates and inequality. Agricultural labor real wage rate increased by 4.6%. The real wage rates of non-agricultural and construction workers are lower at the end of the period, that is 2014 till 2022. Non-agricultural workers form the majority, and they are 68.9% in all agricultural laborers, are among the employed in rural India. For approximately 35% of India's workforce, real wages have not grown since 2014. For long 10 years in Amrit Kal, for 10 years of Amrit Kal, no rise in the real wages of 35% of India's workforce. Even in sectors with an increase in real wage rates, the growth rate is overshadowed by the overall per capita income growth. So this mismatch must be looked into by the government. There is no murmur, no whisper about how this problem will be solved by the government in the Honorable President's speech. Now, after even the Labour Bureau report. What is Labour Bureau report? Labour Bureau report, it says, Labour Bureau report, 3 and 4. Sorry, I have already mentioned about this workforce, so I am not going to repeat the Labour Bureau report. Now the question of federalism. The question of federalism. When this government came to power, everybody listened again and again, repeatedly, that this government believed in cooperative federalism. Cooperative federalism. Now it is not being mentioned because it has already become non-cooperative federalism. The glaring example of federalism is that every state which is ruled by opposition parties, their leaders are being hounded by the central agencies. Never in the history of India this happened. Double engine government we require. Therefore, these the opposition ruled governments are to be dislodged by hook or crook. And this is going on every day. Even a Dalit chief minister has not been spared. The one nation, one election call comes from where? Is it in our constitution? No. Has it been recommended by the Election Commission? No. And surprisingly, the retired President of India has been appointed to head a committee, and that committee is now started discussing on war footing that it is to be implemented as soon as possible. Our Chief Minister, Ms. Mamata Banerjee, has already written to the committee, and she is also coming to attend the meeting tomorrow. That nothing will be accepted by our state at least on this issue. I sincerely believe the other opposition states, they will also not accept, because this is going to be there will be serious ramifications, serious consequences. It is draconian. Our constitutional scheme is altogether different. We are a parliamentary democracy.
not a presidential form of government like USA, but this will open the door for presidential form of government, I apprehend. That is why I totally oppose to this idea of one nation, one election. There is a consistent tendency to erode the fiscal and economic policy space of space government. Resources transferred to states have been subject to regressive conditions, and a significant portion is kept out of the Finance Commission's ambit, allowing central control over their issue. Why this government is not following the recommendations of Sarkaria Commission? And what about the second commission, Unchi Commission, on center-state relations? In 2010, Justice Punchi Commission submitted its recommendation to the then government, and we are in 24. 14 years elapsed. No murmur about that recommendations. 14 years are not enough to finalize the recommendations of the center-state relations recommended by the Punchi Commission. Why the government is avoiding? Because the constitutional heads of the states, their heads will be rolled down if the Commission's recommendations are given effect to. Because the Punchi Commission has categorically stated, while appointing governors, the state governments must be consulted and their concurrence is must. They must not act as agents of the central government as it is happening now. Madam, rampant misuse of central agencies I have already mentioned. Now my driving points to my state about how this federalism is being respected. Only 1 or 2 points. 4 minutes. Center has resorted to fiscal terrorism in Bengal. Yes, Jim. Fiscal terrorism going on in our state by the center. How many central teams were sent to Bengal? More than 100. 156 teams were sent to Bengal to look into the implementation of the centrally sponsored schemes. And wherever the deficiencies or defects were found, each and every deficiency and defects were removed, intimated, even though in the entire country, West Bengal had been singled out and all dues to the extent of 1,16,000 crores, central government has stopped. It is economic blockade. They want to kill the poor people. Terrorism. It is fiscal terrorism. That is why. Because they thought that by suspending the release of the fund, it will have good effect for them in the ensuing election. No. People have understood what is what. Now, therefore, our Honorable Chief Minister on the other day, 3rd February, she announced the state government from its own fund will give the dues of the workers, 21 lakh workers who could not get the wages. They will be paid out of state funds. We are not depending upon the central funds. But we will definitely take out the issue to the people, and the people of Bengal will give a befitting reply for such fiscal anarchy. Yes. There are other points also, Manreka, but my time is limited. Almost only 2 minutes. Yes. So to conclude, I would like to respond in reference to paragraph 37 of the President's speech. I don't like to mention, because paucity of time, what is said there, but everybody knows that is the concluding paragraph. I would like to quote from Rabindranath Tagore, a few lines from his Bengali poem, written 123 years back. The name of the poem is Din Dan. Din means poor, Dan means gift. Quote, few lines. There is no God in that temple.
Said the saint. The king was enraged. No God? Oh saint, aren't you speaking like an atheist? On that throne, studded with priceless gems, beams a golden idol, and yet you proclaim that it is empty? It is not empty. Rather, it is full of royal pride. You have bestowed yourself, O king, not the God of this world, remarked the saint. And it continued, in the very year in which 20 million of your subjects were struck by a terrible drought, the desperate masses without any food or shelter came begging at your door crying for help, only to be turned away. They were forced to take refuge in forest caves, camping under roadside foliages, derelict old temples, and in that very year, when you spent 2 million gold coins to build that grand temple of yours, that is the day God left that temple of yours and joined the poor. Your mundane temple is hollow. It is just a bubble of wealth and pride. The enraged king howled, "Oh, you sham cretin of a person, leave my kingdom this instant." The saint replied very calmly, "To the very place to which you have exiled the divine, vanish now the devout too." Thank you, madam. Before we go to the next speaker, honorable members, the discussion on motion of thanks on the President's address will continue after the introduction of the bills. We now take the bill, the Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024. Shri Arjun Munda to move for leave to introduce the Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024. महोदय, आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित किया जाए। We now take the Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024. Shri Arjun Munda to move for leave to introduce the Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024. उड़ीसा राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Shri Arjun Munda ji may please introduce the bill. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उड़ीसा राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित किया जाए। Yes. Another bill for introduction, Shri Ashwini Kumar Chaube ji to move for leave to introduce the Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024. माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं
कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 का एक और संशोधन करने के लिए एक विधेयक को पुरस्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. No, I did hear the ayes. I request the Honorable Minister to introduce the bill. माननीय सभापति महोदया, मैं विधेयक को पुरस्स्थापित करता हूं। Honorable members, we now resume the discussion on motion of thanks on the President's address. बोलने के लिए श्री तिरुचि शिवाजी। I think you have 29 Thank minutes. you, Madam Vice Chairperson. At the outset, I would first thank the Honorable President for having pleased to deliver her address to both the Houses of Parliament, and also for having read the document of the government without fracturing it, unlike some of those appointed by her in various states. This government is, ma'am, anti-federal, anti-secular, anti-poor, pro-rich. It's anti-women. It is anti-MSc, ME, anti-CPSUs, pro-corporates, anti-farmers and anti-labor, pro-center and anti-regional. See, why I am telling all these things, not it's an evasive accusation against the government or alleging them without any base. In the recent days, after this government has taken over power, there's a blatant attempt to undermine the regional parties and the local issues. There's a stepmotherly attitude we witness and we experience. Take, for example, the devolution of revenue shares. The Finance Commission, 14th Finance Commission recommended to 42%, whereas what we are getting is not that much. It was 34%, then 31.3%, and only now 25%. It was in 21-22, 1.70 lakh crore. Next year it came down to 1.40 lakh crore, and now it is 1.24 crore. Tamil Nadu is the largest contributor of direct taxes to this country, whereas for 1 rupee we pay to the union government, the Tamil Nadu government is getting 29 paise. Whereas the UP, if they pay 1 rupee, they get 2.73, 2 rupees and 73 paise. What is this disparity? Why this discrimination? You say the country is one. You say everything, all are equal. But why this sort of treatment? By way of this GST regime, the Tamil Nadu government has lost, estimated to around 20,000 crore rupees. It was a hasty implementation of GST. We have experienced a lot. And other thing, legislations are not able to be carried over in the assemblies. The elected government, which is in the assembly, do know the needs of the people and they legislate laws. But the Raj Bhavan stand as a stumbling block, and many of the bills that have been passed in the assembly have not been accorded sanction or assent from the governors, and because of that, many state governments are limping, especially the opposition ruling parties. The opposition ruling parties, wherever which states or wherever they are ruling, they are being treated in a manner the central agencies enter in and arm twist the government as well as functioning of the governments. And moreover, very importantly, recently there was a very bad flood in Tamil Nadu, the torrential rains. Before that, there was a cyclone. Chennai and southern districts were affected too much.
We demanded immediate for relief 5,000 crore. We were given only 450 crore, not even 10%. And later, overall estimate, say the defense minister came to the spot and he had an overall view of what happened there. And the Prime Minister was met by the Chief Minister of Tamil Nadu and he gave an estimate of 37,000 crore rupees demanding for immediate relief. Nothing happened. Then a delegation of all party members of parliament came and met the Home Minister, which delegation the Home Minister assured that it will be done. Nothing has been done. So even at the time of distress, they just witness how the states which are being ruled by opposition parties are suffering. This is not the way a union government has to treat a state government under a federal system. That is why I say it is anti-federal. It's not just an accusation against them, but it is the fact because of that. Take, for example, my neighboring state, the Andhra Pradesh. I have been hearing them for the past 10 years, cutting across all the political parties. After the Andhra Pradesh Reorganization Act in 2014, they are demanding for special status to Andhra Pradesh. Polavaram project, it is very much acquainted to us. Nothing has been taken care of because it is not ruled by BJP. For 10 years I have crossed by. They have asked for a special status and are still demanding it. It has not been acceded to. So this is the way states are being treated by the union government. We say it is not fair. Why I say it is unsecular? I would like to remind about the Citizenship Amendment Act. That act was brought, of course, apparently it seemed that India is very genuine and very generous of accommodating those who have been persecuted in the neighboring countries by way of religion will be given citizenship. But that bill that later on which became act very clearly said 3 countries were selected: Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. And from there only 5 religions, selective. Hindus, Christians, Parsis, Sikhs and Buddhists will be accorded citizenship who have registered before 2014. Our question is, while you are so generous of giving citizenship to people who have been persecuted, why Muslims have been deleted in the list? When you have taken 3 countries, why have you not taken about another country which is a neighboring country, Sri Lanka? Sri Lanka, Tamils, 1.5 lakh Tamils are in India without citizenship. The torture they are undergoing because of lack of citizenship cannot be described, and we have represented many a time it has not been taken care of. So when I gave an amendment that religious as well as ethnic persecution, so also include Sri Lanka, include Muslim community, that amendment was defeated by this government. So also the triple talaq. When triple talaq was brought, they said it is in favor of Muslim women. Everyone said, oh, it could be, but actually it is to victimize Muslim men. It is a protective measure a government should take, not a punitive approach. And why I am telling that, I brought a private member resolution for legislation for the welfare of the widows. Ma'am, 4.5 crore widows are in India. And in Brindavan alone, 1.5 lakh widows are there. And those are 20 to 60 years age, nobody takes care of them. They are there begging, they are there pulling rickshaws, they are being exploited by some other people, and some NGOs are taking care. I brought a resolution. We need a legislation because government of Tamil Nadu has given so much of schemes for widows. For your kind information, I would like to remind the House also that resolution was defeated. When you say that you are fighting for women's cause, you say triple talaq is brought for the Muslim women, but it is not so. The undercurrent is to punish the Muslim men, whereas had you been the same intent, you would have supported the women's widows' welfare resolution also. So they take a double standard. So also women's reservation bill. They say we have fulfilled the long wish of political empowerment to women. When? After census, after delimitation,
After reservation, it is far-fetched. It is like extending a carrot before a horse and making it to run. They give an impression to the women that the government has passed a women's reservation bill, but it is not so. May I suggest to the government, if at all you want to empower women, don't go for that. Again, I would like to cite my state as an example. We are giving 40% reservation to women in employment. Why don't you give that? My private member bill for that also is pending, which has not been taken into consideration. So it is anti-women, it is anti-secular, it is partisan towards some religious people. See, everyone should feel secured in this country. I have repeatedly said, when India partition took place, Muhammad Ali Jinnah said, all the Muslims come to my country, Pakistan, which will be for Muslims. The Islamists in this country said, yes, we are Muslims, but India is our country, and they stayed here and they sacrificed for the country. So many of them are in the military. So many have done take for example, Dr. Abdul Kalam. How many have done that? But why you should treat them in this manner is our simple question. Everyone should feel secure, but it is not so. We have to think about all these things. So when I say you are anti-secular, it is all with base and reasons. When I say anti-women, it is also based on what has happened to women community by way of this government's approach. Again, I said it is anti-poor. My colleague, Mr. Sukhendu, quoted many things. The per capita income in India for a person compared to China is 1/4 of it. Whereas in population, China and India are one and the same. I would like to say another thing, very shocking. I am very unhappy to say about my country's situation here in the parliament, which will go across the world. But the government's handling of situations is not in the right manner. I have to tell that. It's our responsibility as a citizen, as a member of parliament, and as, of course, in the interest of the country. India ranks 139th place in the per capita income in the world. Hunger index. And in the G20 countries, you are so proud that you have been successful in conducting G20. The lowest per capita income among the G20 countries is India. But you are climbing high that you have conducted the G20 summit very successfully. 22 crore people are suffering from poverty. That also was mentioned. Even the President address said, Garibi Hato was once a slogan, but now we have uplifted 25 crore of people from poverty. Where comes? 22 crore people are still below poverty line. And what is the index? What is a parameter of below poverty line? For a rural person, for a rural family, it is 27 rupees per day, 816 rupees per month. For one who is in the urban, it is 33 rupees, 1,000 rupees per month. One can imagine how can a family survive with 1,000 rupees and 800. But the President address says, on behalf of the government, it says that, we have uplifted poverty and people from poverty, and India ranks 5th in the global in economic power. Soon we will be in the 3rd place, all because of the corporates. You are anti-poor and you are pro-corporate. That is what we are telling. 10% of our population get 57% of the nation's income. 10% of the population enjoy 65% of nation's wealth, whereas only 3% of the nation's wealth is possessed by 50% of the population. Let them please explain to us that you have uplifted poverty, people from poverty line. This is the condition of the poor. The Manrega, earlier the number of people who were benefited was 4.14 crore. And now it has increased to 6.16 crore. After the COVID impact, how many things were affected? Have they been restored? Has it been brought to the possession? No. The government was concentrating on other things. The oligopolistic conglomerates, some have a control over all the substantial parts of economy and even policy matters. I don't want to tell who it is. Everyone knows where Parliament whole session was taken away by that. Some people who own everything
controls the entire economy of the country. It is all private business people. So also, the MSME, very important sector. A question was raised in the morning. It provides 20 crore employment to 20 crore people. Next to agriculture sector, MSME is the only sector which provides more employment. It contribution to GDP is 29%. And in the exports, its parts is 45%. I am the chairman of the Committee on Industry. I know very well how we are patronizing. Ma'am, you know very well, being a part of it. So that MSME is not patronized to the extent. How many units fell sick and went out of it? How many people came to the streets? One MSME unit gives employment to 5 persons. But it is not taken care of. Let me tell, 2,300, just 2,300 individual enterprises, companies, their loan default is 2 lakh crore. 2,300 business people's loan amounts to 2 lakh crore people. And Indian banks have written off 5.3 lakh crore to corporates only. Whereas the NPA of the MSME, comparatively, I said 2,300 equal to 2 lakh crore. The numbers are very big. 18.65 lakh units of MSME. Total MSME units in our country are around 6 crore. Whereas the NPA are only 18.6, maybe 19 lakh units. But the total amount is just 16,341. This 18 lakh or 19 lakh units employ 1 crore people, and their loans to the bank's NPA that has not been repaid is only 16,000 crore, and whereas only 2,300 business people have got 2 lakh crore not repaid, and so also their loans have been waived off for 5.3 lakh crore. It's all alarming. What is happening? This government says maximum governance, minimum government. But minimum achievement, more trumpeting. They have spent 4,880 crore towards advertisement. That is public exchequer money. What about agriculture? One can recall all my colleagues in the House, how the farm bills were passed in the House. You can be proud to say that we have passed so many legislations. As many other members have pointed out, after having sent out to the opposition parties who will raise voice against or point out the errors of the government, they were all suspended, sent out, and you have passed legislations. So also scrutiny of the bills are also not like that. In 2014, what they point often, the UPA government, 71 bills were referred to Parliament Committee scrutiny. But now it is only 17%. Why? 71% and now 17% means they are not depending upon the scrutiny. In the House, it will be 2 hours, it will be 1 hour, it will be 3 hours, members' time will be 3 minutes, 2 minutes, whereas in the committee it will be an elaborate debate. The stakeholders can appear. The government is bound to come and reply and make alterations, and the recommendations will be considered seriously, whereas all the parliament committees have become insignificant. And this is the way they are. Budget for agriculture coming down year by year. Before, budget for other things have been increasing. Home Department, defense, okay, that's all okay. But why agriculture budget is coming down? Agriculture is the spinal cord of India. I say, one can call the 2008 economic recession, when the whole world was suffering under it. It emerged from the Europe and affected the whole of the world, but not India, only because of the public sector units and the agricultural sector. But you are killing both. The farm bills were brought with what intent? To encourage some corporates. And it was passed when the house was not in order. And when the whole country, the farmers came to the road and agitated, it was taken aback. And so also the budget is coming down. And the exports of farm produce banned
wheat in May 2022, broken rice in September 22, and onion in December 23. Farmers are not encouraged. Their produce are not allowed to export. They are not patronized. Fertilizers price is going on, increasing, and input costs are increasing, whereas the price of the agriculture produce are not being proportionate to the expenses. The government promised that we will double the income of. Nothing happened. Again, we would like to say, like how you said, 2 crore employment will be generated. So far, only 7 lakh employment has been generated. But the need is 7 crore. And you said 15,000 rupees will be deposited in everybody's account after 15 lakh, sorry. I am coming. 15 lakh rupees will be deposited in every person's account after unearthing the black money. And someone said, no, we didn't say like this. If at all we unearth the black money, that would be equivalent to 15 lakh rupees in every account. Have you unearthed? Have you deposited? No. So all are election jumla, as they themselves have said. So the Farm Bill was brought in that manner. The Article 370's abrogation happened in that disorderly manner. Business are being not conducted in the manner it should be. So many silence. When Manipur, everybody knows, northeast states, which you say that you are taking too much of care. Manipur, what happened? The whole world was watching. The clash that happened between two groups, it totally stagnated everything in the country. How women was treated, everybody knew. What we demanded? Just an explanation from the government. What for is a parliament? It's a debating forum. We have to debate, we have to deliberate, we have to decide. The government is accountable to the parliament. The parliament is accountable to the people. When the members of parliament come to the house and demand an explanation from the government, there was only silence. When there was a no confidence motion in the Lok Sabha, even then explanation was not given. So Manipur, nothing has been resolved so far, no explanation from the side of the government. 2 persons intruded into the parliament despite the security we have here. We were not allowed to discuss about it. No explanation from the government. We asked nothing out of the way. What is happening in the country, we want to know, and the government is accountable to the parliament. You come here and explain to the parliament, which will be told to the people. But it is not so. So I considering my time, and I have to give way to my colleague, my sister, to some areas also for her to deal with. Because this government has spoiled this country in many areas, but something has to be left to her. And very importantly, I have to tell, as I said, Finance Minister has come, kindly take care of the states about the devolution of funds which are reducing every year by year, which we are very much concerned about. And so also take care of the Tamil Nadu government's demand that flood relief and cyclone fund we have been asking for, but we have not been accorded so far. And right thing, at least he has come. Take care of the states which are being ruled by opposition parties also. And ma'am, to conclude, I would say, Mahatma Gandhi envisaged a village India. Pandit Nehru built a modern India. Lal Bahadur Shastri aspired for a Kisan India. V.P. Singh created a social justice India. Manmohan Singh, a globalized India. Honorable Narendra Modi ji is taking defederalized India. We are very sorry to all these things. 10 years have been given to you. In these 10 years, what is the net result? The progress report shows more poverty, more poor people, more unemployment. Small-scale industries are being crushed. Many corporates are having their hands upon them. MSME has to be taken care of. All these things, when we say, we can just remind them one thing, remind of the IPC World Cup series which happened. 10 matches,
Indian cricket team won like anything, and a much hype was made for the final match. Even the Prime Minister went and everyone was there. Whole nation was proud and nobody looked after any other thing. The team which won 10 matches lost miserably in the final. So also you might have secured 2 Lok Sabha seat, elections, you have won. You might have won the by-elections, but 2024 elections will be the IPC World Cup Series to Indian cricket team will be to the present one. I'm not IPL, sorry. Thanks. Thank you very much. IPL. And again I say, not because of just we are not here and they are there, not able to tolerate someone who is in power. We have witnessed, we have experienced, we have suffered. Uphold federalism. You have to be secularist country, and states have to be protected, and youth have to be taken care of, labor have to be taken care of. Anti-labor policy should not be, we should be India in its own form. Since you have not done it, the 2024 elections, the India Alliance will win and bring back India to its original place. Thank you very much. Thank you. Thank you, Tiruchuji. Shri Sandeep Kumar Pathak. धन्यवाद ऑनरेबल चेयर मैडम। मुझे आज महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव में बोलने का मौका मिला है, इसके लिए मैं भाग्यशाली हूँ। आप सबका भी, मेरी पार्टी की तरफ से भी, और उन सभी जनों का जिनका मेरे ऊपर आशीर्वाद है। ऑनरेबल चेयर मैडम, आप अगर अभिभाषण को पढ़ेंगे तो पहले पन्ने के पहले ग्राफ में ही 3 महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। सबसे पहला है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके बाद लिखा गया है अमृतकाल, और फिर तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि बिलीवर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस। मैं इन तीनों बातों को आधार बनाकर अपनी बात को आपके सामने और देश के सामने रखना चाहूँगा। ऑनरेबल चेयर मैडम, हम सब राजनीति में देश को आगे बढ़ाने के लिए और इस देश को श्रेष्ठ बनाने के उद्देश्य से ही आए। हम सारे अपने अपने जीवन में अलग अलग क्षेत्र में थे। हमने जीवन में सब कुछ छोड़कर राजनीति में आने का कारण ही यही था कि हम इस राष्ट्र को श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस सदन में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति या किसी भी सदस्य और उस पूरे देश में किसी भी व्यक्ति के मन में संदेह होगा कि इस देश को कोई श्रेष्ठ बनाना नहीं चाहता है। प्रश्न यह है कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत का मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब है कि इस देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति में समानता हो, भारत ऐसा बने कि पूरी दुनिया में गौरवान्वित हो, श्रेष्ठ बने। प्रश्न यह है, ये प्रश्न नहीं है कि हम सब इसको मानते या नहीं मानते, हम सारे मानते हैं, इसीलिए सब कुछ छोड़ के राजनीति में आए हैं। प्रश्न यह है कि क्या इस देश को एक और श्रेष्ठ बनाने के लिए हम पर्याप्त काम कर रहे हैं। दूसरा, अमृतकाल, बिल्कुल सही बात है। अमृतकाल की संभावनाओं के बारे में भी किसी को कोई संदेह नहीं है। इस पूरे देश के हर व्यक्ति, हर नागरिक, जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज उपस्थित है, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं पूरे देश में हैं, सब कुछ संभावनाओं को दर्शित करता है। तो अमृतकाल की संभावनाएं अपार है। जिस तरीके से हमारे पास संभावना है एज एन ऑपोजिशन पार्टी, एज ए मेंबर ऑफ दिस कंट्री, उसी प्रकार से सरकार के पास भी संभावनाएं हैं कि अमृतकाल की संभावनाओं को वो कैसे इस राष्ट्र के देश में परिप्रेक्ष्य में उकेरते हैं। प्रश्न ये नहीं है कि अमृतकाल अभी है या नहीं है, प्रश्न ये है कि क्या अमृतकाल की संभावनाओं को हम वास्तविकता में बदलने के लिए पर्याप्त काम कर रहे हैं। ऑनरेबल चेयर सर, एक भारत श्रेष्ठ भारत तो तभी होगा ना जब इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को एक समान और श्रेष्ठ शिक्षा मिले। एक भारत और श्रेष्ठ भारत तभी होगा जब इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को एक समान और श्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधा मिले। एक भारत और श्रेष्ठ भारत तभी होगा जब सभी व्यक्ति को समान न्याय मिलेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी होगा जब सबको बराबर की सुरक्षा, रोजगार, पारदर्शी गवर्नेंस, राजनीतिक स्थिरता और नैतिक दायित्वों का निर्वहन होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत तो तभी बनेगा जब देश के हर एक व्यक्ति को समानता हो और उसके श्रेष्ठ बनाने के, उसके आगे बढ़ने के सभी व्यवस्थाएं पूरी हो। ऑनरेबल चेयर सर, एक एक करके मैं कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं
इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का पक्षधर हूं। मुझे ये लगता है सारी चीजों को देखते हुए पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने, भारत की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से काम किया है, ये पूरा काम एक पैच वर्क का काम दिखता है। कहीं भी मुझे एक भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं दिखता है जिस इंस्टीट्यूशन को उठाकर पूरा फोकस उस इंस्टीट्यूशन को इंप्रूव करने में लगाया हो। ऐसा लगता है कि सारा का सारा एक पैच वर्क है और पैच वर्क में थोड़ा सा पैसा इसमें डाल दो, थोड़ा पैसा इस पे डाल दो, थोड़ा पैसा उस पे डाल दो, आज अगर ये हो गया तो इस पे पैसा डाल दो, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा सब कुछ करने के चक्कर में मुझे लगता है जो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है वो इंस्टीट्यूशंस के साथ हो रहा है। और अगर इंस्टीट्यूशन के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ तो देश विकसित होना बहुत बहुत दूर की बात है। ऑनरेबल चेयर सर, अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं तो 3 आधारभूत परिप्रेक्ष्य हैं जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए। आंकड़े तो बहुत सारे हो सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एक व्यक्ति की कमाई कितनी है, क्या उसकी कमाई में बढ़ोतरी हुई। दूसरी चीज होती है उस व्यक्ति को अपने जीवन को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए खर्च कितना करना पड़ता है, क्या उसमें महंगाई में कोई बढ़ोतरी हुई। और तीसरा है इन सब के बाद कि वो बचत कितनी कर पा रहा है, तो इनकम कितना है, खर्च कितना करता है और सेविंग कितनी हो रही है। इन 3 बातों को ही अगर हम देख लें हर व्यक्ति के जीवन में तो पता चल जाएगा मोटा मोटे के अर्थव्यवस्था की ओवरऑल स्थिति क्या है। आज अगर हर व्यक्ति की कमाई को हम देखें तो G20 और ब्रिक्स देशों में सबसे नीचे है, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों से भी हम नीचे हैं। अगर आप देखें कि प्रति व्यक्ति आय में जो बढ़ोतरी 145% के आसपास थी पिछले दशक में, इस दशक में जो अभी की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उसमें लगभग 67% की बढ़ोतरी है। मैं ये नहीं कहता कि बढ़ोतरी नहीं हुई, बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पिछले साल इतना था इस बार इतनी। आपको बढ़ोतरी को पूरे ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में रख के देखना पड़ेगा कि कितनी बढ़ोतरी हुई। अगर पिछले दशक से और इस दशक में अगर कंपेयर करें तो जो बढ़ोतरी हुई है वो 50% कम हुआ है। दूसरा, अगर एक्सपेंडिचर को देखें सर, एक भारत और श्रेष्ठ भारत कैसे होगा जब महंगाई इतनी ज्यादा है। हर व्यक्ति के थाली में क्या सेम सामान सभी अन्न खाद्यान्न आ सकते हैं? क्या हर व्यक्ति उसी प्रकार से बराबर खा सकता है? आज की परिस्थिति में तो नहीं खा रहा है। तो जिस दिन इस देश का हर व्यक्ति समान भोजन करने की स्थिति में पहुंचेगा उसी दिन ये देश श्रेष्ठ भारत बनेगा और एक भारत बनेगा। महंगाई अगर देखें तो फूड इन्फ्लेशन 9 से 10% के आसपास रहा है। वेजिटेबल में देखेंगे 30% का इंक्रीज रहा है। दाल के भाव 20% बढ़ गए, अनाज के भाव 10% बढ़ गए, तेल के भाव रिफाइंड ऑयल 70 रुपए हुआ करते थे 2014 में, अब लगभग 200 के आसपास पहुंच गए। एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो खाना बनाने का गैस होता है, 3 गुना उसके भाव बढ़ गए। 400 मिलते थे 1200 होने लगे। बहुत सारे ऐसे आंकड़े। मैं सिर्फ मूलभूत बात यह रखना चाहता हूं कि जब तक इन चीजों को व्यवस्थागत तरीके से एड्रेस नहीं किया जाएगा ये महंगाई दूर नहीं होने वाली है। आपकी कमाई तो थोड़ी बढ़ी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब आप ओवरऑल ये देखिए कि पिछले दशक में एक व्यक्ति कितनी बचत करता था और इस दशक में कितना बचत कर रहा है। यही एक मूलभूत और बड़ा सिंपल तरीका है ये देखने का कि क्या हमारे देश की अर्थव्यवस्था और क्या बढ़ी है और क्या लोगों का जनमानस का जीवन स्तर ऊपर उठा है। बहुत सारे और आंकड़े हैं, लेकिन इनके अलावा अगर मैं इंस्टीट्यूशंस पे बात करूं, इंस्टीट्यूशन, आप बैंकिंग सेक्टर ले लो, 10.5 लाख करोड़ का हम राइट ऑफ कर रहे हैं। आप कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत बनेगा कैसे? अगर एक गरीब आदमी 1 लाख का लोन लेता है, 50,000 का लोन लेता है, तो उसके घर बैंक के अधिकारी पहुंच जाते हैं, कॉलर पकड़ के उससे बैंक का लोन वापस लेते हैं। दूसरे तरफ ऐसा होता है कि अगर 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ का कोई लोन लेता है तो उसका हाथ पकड़ के विदेशों में भेज दिया जाता है। ये कैसा देश है? गरीब अगर लोन लेता है उसके लिए दूसरे नियम, अमीर एक, तो मुझे भी ये लगता है कि लोन 1 लाख 2 लाख का ना लेके 1-2 करोड़ का, लाख करोड़ का लोन लो, फिर उसमें छुटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और सरकार भी हाथ पकड़ के बाहर लेके जाएगी। कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत बना पाएंगे हम? कर्जा की बात अगर मैं कहूं तो पिछले 14 प्रधानमंत्री हुए हैं 67 साल के कार्यकाल में 55 लाख करोड़ का कर्जा लिए। पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग 100 लाख करोड़, 3 गुना ज्यादा का कर्जा लिया हुआ है। तो कर्जा का हमने देख लिया, बैंकिंग का देख लिया। बैंकिंग की सेक्टर की हालत खराब है। आप अगर विदेशों में हमारे प्रति क्या भावना है दुनिया की, ये देखना है तो उसका सबसे सही आंकड़ा होता है कि FDI कितना हुआ है।
बढ़ रहा है, घट रहा है, और ये बढ़ रहा है, घट रहा है पिछले साल, इस साल, पिछले हफ्ते से नहीं, ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में रिलेटिवली हमारे कितने बढ़े, कितने घटे, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि आज हम तुलना, कंपटीशन अपने आप से नहीं कर रहे। आज हम बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया में जिससे हमको पछाड़ना है, उनको पीछे करके आगे लेके जाना है, हमें श्रेष्ठ बनना है। तो ग्लोबल एफडीआई इनफ्लो का जो शेयर है वो डिक्लाइन हुआ है। आप सॉवरिन क्रेडिट रेटिंग होती है, एक क्रेडिट रेटिंग होती है। जैसे गांव में आप जाओगे, किसी को उधार देने से पहले से कहते हैं कि भाई इसको उधार मत देना क्योंकि ये तो वापस ही नहीं करता है, इसको उधार मत देना, इसके पल्ले 4 पैसे नहीं है। एक आदमी होता है, बोले हाँ इसको उधार दे दो, ये आपको वापस करेगा। वो एक क्रेडिट रेटिंग होती है। आपके क्रेडिट कार्ड की भी रेटिंग होती है, देश की भी क्रेडिट रेटिंग होती है। क्रेडिट रेटिंग जिस तरीके से स्टेगनेंट है पिछले दशक में, ये स्पष्ट दर्शा रहे हैं हम पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन जाए, तीसरी इकोनॉमी बन जाए, पर विदेशों में हमारे अर्थव्यवस्था के प्रति बहुत ज्यादा लोगों में उत्सुकता नहीं दिखाई दे रही है। आप डेप्रिसिएशन अगर देखें तो $1 मोदी जी के आने के पहले 58 रुपए के आसपास, 54-58 रुपए के आसपास हुआ करता था। आज ये 80 रुपए पार कर गया है। हम बार बार कहते हैं कि विदेशों में हमारा मान बढ़ा है। भाई विदेशों में मान कैसे बढ़ता है? विदेशों में मान 2 ही तरीके से बढ़ते हैं। एक तो होता है हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, जो हमारे कलेक्टिव व्यवहार जो है उसके कारण परिलक्षित होती है विदेशों में, और दूसरा होता है पैसा। कितना पैसा है आपके पास, कितने बिजनेस करा सकते हो आप उनको, आपको आपके पैसे से ही वो रेट करेंगे। तो अगर डॉलर के हिसाब से अगर रुपया गिरता है, प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने एक बार कहा था, जब रुपया का वजन गिरता है विदेशों में तो देश का मान गिरता है। मैं सहमत हूं उनसे। तो देश का मान निश्चित रूप से गिरा है। झप्पी डालने से, गले लगाने से वो मोमेंटरी बेनिफिट दिखता है कि गले लगा लिए, 2 बार गले लगा लिए, 3 बार, अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन वो फंडामेंटली इस बात को नकारते नहीं है कि आपकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। इसके अलावा ऑनरेबल चेयर सर, सीएजी के रिपोर्ट पे पहले बहुत बात होती थी। सीएजी के रिपोर्ट पे आपको याद होगा कि सरकारें गिर जाया करती थी। सीएजी कहती है कि सरकार डेटा कंसील कर रही है। 2021 और 22 के आप देखेंगे सीएजी में तो बहुत सारे डेटा को कंसील करने की बातें आई हैं। अगर मैं रोजगार के पक्ष में बात करूं तो मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ के आसपास रोजगार देंगे। रोजगार कहां गया? 45 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्यों है? मनरेगा एक स्कीम होती थी, मनरेगा के पैसे होते थे, मनरेगा में आपने पैसे घटा दिए, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, शूट अप कर गया। तो ये पैच ऑफ वर्क करेगा नहीं, हमको फंडामेंटली इंस्टीट्यूशनल इंप्रूवमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। मैंने इसी सदन से प्रश्न पूछे थे कि क्या सरकार ने पिछली 10 सालों में कितनी नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी? उत्तर आया सतत प्रक्रिया है, मिशन मोड में काम कर रहे हैं। मैंने पूछा कि जो आप 9.5 लाख के आसपास खाली पद है, कब तक भरने का प्लान है? उत्तर आया सतत प्रक्रिया है, मिशन मोड में। कुछ भी प्रश्न पूछो, आपका उत्तर यही है, सतत प्रक्रिया है, मिशन मोड में काम चल रहा है। मैं सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं, आपके समक्ष ये रखना, या तो सरकार के पास इसका उत्तर नहीं है या उत्तर है तो छुपाना चाहती है। तो फिर कैसे हम श्रेष्ठ बनेंगे? जब उत्तर छुपाने लगेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? अमृतकाल की संभावनाओं का क्या होगा? ये पैच ऑफ वर्क से काम नहीं चलेगा। हरियाणा में अभी इजराइल में कुछ लोगों को नौकरी के लिए भेजा गया। वहां के मुख्यमंत्री और वहां की जो भारतीय जनता पार्टी छाती ठोक के कह रहे कि हमने इजराइल भेज दिया। इजराइल, अरे भाई इजराइल में लड़ाई चल रही है, अपने बेटे को भेजेगो क्या इजराइल? अपने बेटे को भेजोगे नौकरी करने? वो इजराइल नौकरी करने जा रहा है क्योंकि उसके देश में उसके पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, वो खुशी से नहीं जा रहा है। तो इस पे हमें खुश होने, हम कैसे श्रेष्ठ भारत बनाएंगे? ऑनरेबल चेयर सर, भ्रष्टाचार की तो बात ही छोड़ दें, मैं एक ही शब्द में यही कहना चाहूंगा कि काला धन लाने की जो बात कही गई थी उस पर कुछ हुआ नहीं, बट वो जुमला था, हमें बता दिया गया है, हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। एक इंडेक्स होता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसने 93वां नंबर हमें दिया है। आउट ऑफ 180 कंट्रीज we were ranked 93. Bhutan was ranked 26, way above than us. इंडिया, आप बाकी को तो भूटान को छोड़ दो, तुनीशिया, रवांडा और घाना जैसे देशों से भी नीचे। कैसे श्रेष्ठ बनेंगे? कैसे श्रेष्ठ बनेंगे? स्लोगन ना बन के रह जाए, हमको श्रेष्ठ बनना है, हम सबको मिलकर काम करना है, पर ऐसे कैसे श्रेष्ठ बनेंगे? कैसे अमृतकाल की संभावनाओं को प्रखर करेंगे? रेलवे की बातें होती है। ऑनरेबल चेयर सर, रेलवे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। वो एक बच्चा होता है ना कि स्कूल में वो गणित जब उससे बनता नहीं है तो वो मम्मी को कहता है, मम्मी
मुझे गणित नहीं बनाना है, गणित में बस पासिंग मार्क लाना है, मैं दूसरे विषय पढ़ूंगा। मम्मी मुझे गणित नहीं। ये कोई भी डिपार्टमेंट जो कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा है, उसको रिफॉर्म करना कठिन हो रहा है। तो इस सरकार की ये नियति बन गई है, आदत सी बन गई है कि इसको रिफॉर्म मत करो, इसको पीछे रखो, 4-5 नई चीजें शोकेश में ले आओ। तो रेलवे को रिफॉर्म करने के बजाय आप नए रेल ले आए, फलाना ढिमका, ये वो, बाकी सारी ठीक है, बनना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, सारी चीजें लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द इंटायर रेलवे डिपार्टमेंट। आपने उस इंस्टीट्यूशन का कचरे का डब्बा बना दिया है पिछले कुछ सालों में, और 4 जगह ट्रेन का आप यहां पे फ्लैग ऑफ कर रहे हो, वहां हमारे इंस्टीट्यूशन का क्या हुआ रेलवे का? पिछले 9 साल में 11 बड़े ट्रेन एक्सीडेंट हुए, 2014, 2016, 2017, 2020, 2022, 2023, 2023 में 4 एक्सीडेंट हुए। कैसा देश है? कैसी इस सदी में आकर अगर रेल में अरे हम कोई 500 किलोमीटर पर आवर स्पीड से नहीं चल रही हमारी ट्रेन, 100 किलोमीटर मुश्किल से टच कर रही है, उसमें डिरेल हो रहा है। अगर सीएजी की रिपोर्ट आप देखेंगे इस पे डिरेलमेंट पे, तो सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि जो रेल की पटरियां हैं वो पुरानी हो गई है, बदलनी पड़ेगी। रेल की पटरियां पुरानी हो गई है, बदल नहीं रहे, रेल में जो मेंटेनेंस होनी चाहिए ट्रैक पे वो नहीं हो रहा है। आई विल टेक सम मोर टाइम। 63% जो है सर रिपोर्ट वो टेबल ही नहीं होते। ऑनरेबल चेयर सर, आप विमेन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे देश विमेन और माताओं के सम्मान के लिए अग्रणी रहा है, माना जाता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त त्राफला क्रिया। अगर आप महिलाओं का और नारियों का सम्मान नहीं करेंगे तो सारे किए अच्छे कार्य का बेड़ा गर्क हो जाएगा। यहां पर हमारी रेसलर बहनें प्रोटेस्ट कर रही है, उनके प्रधानमंत्री जी के पास जब वो जीत कर आते हैं तो उनको सुनने के लिए आपके पास समय है, लेकिन जब वो समस्या में है, जब दुख में है, तो उनके पास जाके, मैं नहीं कह रहा कि किसकी गलती है, वो कोर्ट तय करेगी। सर मैं क्लोज कर रहा हूं, सर मैं क्लोज कर रहा हूं। थैंक यू मिस्टर पाठक। सर, ऑनरेबल चेयर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस टाइम। आप एजुकेशन सेक्टर ले लो सर, आप थैंक यू। If there had been a request from the party for extension of time, I would have given that. I'll just give me sir 2 minutes. I'll just close. Thank you very much. Okay. Just 2 minutes. Okay. Thank you. देश को श्रेष्ठ बनाने के लिए मुझे लगता है राम राज्य की परिकल्पना को हमें धारण करना पड़ेगा। राम राज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने और महाकवि वाल्मीकि ने भी लिखा हुआ है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरति श्रुति नीति। ऐसा देश बनाना है जहां हर व्यक्ति सुखी हो, हर व्यक्ति संपन्न हो, कोई किसी के हिस्से में दुख ना हो। पर राम राज्य की परिकल्पना सिर्फ किताबों में रह गई है। दिल्ली की सरकार इस पर काम कर रही है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म बहुत जरूरी है। नेहरू जी ने टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए, बहुत अच्छी बात थी। अटल बिहारी जी ने इस देश को एथिकल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइज किया, एथिक्स को बड़ा करके अटल जी ने दिया। मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने काम की राजनीति को, स्कूल और अस्पताल को राजनीति में लाके इंस्टीट्यूशन किया। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी के पास सब कुछ करने की अपॉर्चुनिटी है, उनके पास इतनी ब्रूट बहुमत है, आप सारा कुछ कर सकते हो। अमृत काल की संभावनाओं का उपयोग करिए। श्रेष्ठ भारत बनाने में सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, कोई अकेला कर नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच सर, इतना समय देने के लिए। थैंक यू मिस्टर पाठक, थैंक यू। Supplementary demands for grants 2023-24, Srimati Nirmala Sitharaman. Thank you, sir. I rise to lay on the table a statement both in English and Hindi showing supplementary demands for grants 23-24. Supplementary demands for grants of Union Territory of Jammu and Kashmir 2023-24, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, I rise to lay on the table a statement again in English and Hindi showing the supplementary demands for grants in respect of the Union Territory of Jammu and Kashmir with legislature for the year 2023-24. The interim budget of Union Territory of Jammu and Kashmir 2024-25, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, I again rise to lay on the table statements in English and Hindi of the estimated receipts and expenditure 24-25 of the Union Territory of Jammu and Kashmir and statement under Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2006 in English and Hindi. Thank you. Dr. Prashant Nanda.
धन्यवाद महाशय। गृहरे उपस्थित सबु सभ्य मान को मोर नमस्कार, जय जगन्नाथ। 31 जनवरी को सुबह 11 बजे सारा देश में सब लोग उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे थे सुनने के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण। उत्सुकता इसलिए था कि कोरोना के जो 2 साल गुजर गए उसमें लोगों को ये लगता था कि हमारा पोजीशन क्या है। 2 साल तो हम ढकेल दिया कोरोना ने हमको, अभी उसके 2 साल के बाद अभी हमारा पोजीशन क्या है, हम कहाँ किस स्थिति में है। और राष्ट्रपति जी ने इसके बारे में सुना दिया डिटेल, जिसमें रहा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोले, वुमेन रिजर्वेशन के बारे में बोले, डिजिटल इंडिया के बारे में बोले, 4 पिलर्स के बारे में, यूथ पावर, वुमेन पावर, फार्मर्स पावर एंड पुअर, उसके बाद एक्सपेडिशन ऑफ वर्क अंडर जल जीवन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी, सब सारे का सारे बोल दिए। बड़े खुश हुए होंगे सारे हिंदुस्तान। खुद को अच्छा लगता होगा कि चलो इंडिया आगे बढ़ रहा है, ये भावना सबके मन में आता है। इसीलिए मैं पहला राष्ट्रपति जी को धन्यवाद अर्पण करता हूं। सर, इसमें ये भी बोलना चाहता हूं कि जो 2 साल धकेल दिया सारा देश को पीछे, हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरीज और ये सेंट्रल गवर्नमेंट सभी ने कोशिश किया